Sure. So today onwards we'll be talking about functions. So when you talk about functions, एक basic फंडा हम लोग के दिमाग में रहता है. Functions are much similar to what we have done earlier, but considering शायद कुछ नहीं किया या background ही नहीं है, we'll go with the basic. What is function? How to work with. Then I'll be keep on adding one element to the function so that we have a clear-cut idea about what we are having towards. So if we tend to say functions के बारे में क्या कहो? What exactly function is about? कैसे चलता है? किस तरह से? Normal life जो है ना, normal life चलता है. Then one fine day there is a function. Life changes. The function goes off and you're back to the square. I mean, think about. Probably every day seems to be very normal, unless it's your birthday. Now साल में एक दिन you are treated like a king and a queen. याद है? जो माँ हर रोज गालियां दे के उठाती है, वो बहुत प्यार से उठाती होती. उठ बेटा आज बर्थडे है, चलो आज तो उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ. Probably डैड जो नो थोड़ा एग्रेसिव तरीके से आपका इज्जत निकालते हैं, वो कुछ भी बोले तो मम्मी होता आज बर्थडे, आज रहने दो, ठीक है. Friends who mistreat you or they have their own way of treating you. और बर्थडे भाई का बर्थडे, अरे बर्थडे ये वो. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद वो उसी दिन तुमको याद कर लेते हैं कि अरे हैप्पी बर्थडे यार, कैसा है, ऑल गुड, ठीक है. So that day goes in a best way manner कि भाई चलो सुपर. Okay, what happens the second? Logic simple है. Back to normal life. So the phenomena which we go with is simple. You had a normal life, you had your birthday, and then you have a normal life. यानी कि फंडा सिंपल है. Changes. हम लोग का भी होता है. People have count down. I remember my sister started counting. Yesterday only she was saying, "Bye. 28 को बर्थडे है." बोलो this month, June. बोला do you realize it's June? बोला बजट तो रेडी कर. बोले तुझे क्या बेकार देने वाला है? बोला आउट ऑफ क्वेश्चन. So the logic is very simple. Is the way we work with. So we wait for a certain function comes and go. याद करो हम में से बहुत लोगों का सेटिंग्स रहता है कि अरे दिवाली. Now I remember my mom, I don't know, ये female department works much differently in terms of functions. तो yesterday she suddenly गुड़ी पड़वा पहनने के लिए आपके पास कुर्ता है. बोले गुड़ी पड़वा कब है? बोले अप्रैल. ठीक है, आई विल बाय दैट. नहीं आप जाओ क्योंकि आपके साइज का मिलता नहीं, आपको 3-4 स्टोर है. थैंक यू. बजा ली. मैं आई गेट इट स्टिच. मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, करवा लो. फाइन, व्हाटएवर इट इज. द कांसेप्ट इज दिस वे. फंक्शन क्या है? वी से कोड और अ स्क्रिप्ट written away from actual code. Think about it. हम ऐसे सब ये एग्री करेंगे कि functions is something which keeps us happy or rather keeps us going. Normal life बहुत boring होता है अगर functions नहीं होंगे. If you go through all the functions, whatever religion you follow, they come at a regular interval, and God bless they come at a regular interval. I mean, normal life में पक जाते हैं. I mean, कब traditional पहनते? कुर्ता पायजामा. Imagine me having no kurta and all वो shawl. I don't know. That's not exactly shawl. I don't know what it is called. I find it very difficult to carry. But वो हर बार मम पकड़ा देती है या public बोलते हैं अरे अच्छा है, तो मैं भी हीरोगिरी में पहन लेता हूँ. But then I realized we should respect girls for wearing salwar kameez because it is very difficult. गाड़ी से बैठते हुए उतरते वक्त लास्ट टाइम मैं बैठा, बंद किया, कुर्ता पीछे रह गया, अटक गया, एंड मैं बाद में देख रहा हूँ, मुझे बोलता है माय सिस्टर वाज देयर विद मी, सो शी वाज शाउटिंग. अब मालूम पड़ा इंडियंस आर सो डिफिकल्ट टू कैरी. थैंक यू. द लॉजिक इज वेरी सिंपल. सो कोड और स्क्रिप्ट रिटन अवे फ्रॉम द प्रोग्राम, अवे फ्रॉम द मेजर स्क्रिप्ट. ठीक है. एक्चुअल कोड से अलग लिखा तो सर हाउ वी आर गोना एक्टिवेट दैट? समबडी वुड कॉल इट एक्टिवेटर व्हेन कॉल्ड. ओके, मतलब जब बुलाया जाएगा तब एक्टिवेट हो. सर मतलब बुलाया जाएगा कैसे? ओके, पीछे व्हेन कॉल्ड कंट्रोल, जो आपका कंट्रोल फ्लो है, कंट्रोल गोस टू कोड जिसे आप कहते हो फंक्शन. इट एग्जीक्यूट्स एंड बाद में क्या? देन कंट्रोल goes back.
ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल फंक्शन। एक ऐसा लॉजिक समझो, मैं सिर्फ ब्लॉक्स में समझा रहा हूं, तुम्हारा एक्चुअल स्क्रिप्ट है। सो लेट्स कॉल इट फंक्शन। तुम्हारा ये कोई कोड है, यू आर नॉट वरीड अबाउट। अब बीच में फंक्शन को कॉल किया, the function would be called, get the function executed, and once over it will come back to next state. So तुम्हारा फंक्शन चालू हुआ, खत्म। ठीक है, मतलब सर, तो डोंट यू थिंक ये कोड में यहीं पे लिख लेता बेटर होता rather than writing it away? There is a logic behind this. What if you need it again? You realize you need it again, function. Again comes the next. So sir, multiple times can we do this? Yes. जितनी बार आपको चाहिए वो फंक्शन लिखा एक बार गया, पर जितनी बार चाहिए आप उसे कॉल करते बैठोगे, एंड दैट इज व्हाट गोज ऑन द बिगर राउंड्स। सो this is the reason why functions are very much preferred. If you see in the current code, अगर मैं यही कोड यहाँ लिखता तो 3 बार मुझे कोड लिखना पड़ता, 3 बार मुझे ऑपरेट करना पड़ता। On the other hand, if you work with the basic idea of function would remain. I have written it once, called it thrice. The code, whenever called, control gets transferred, function gets executed, you go back to the program. Called, control gets transferred, gets executed, comes back. Called, control gets. Moral of the story, sir, ऐसे बोल के चलते हो कि एक बार लिखने पे मैं उसे बार-बार यूज कर सकता हूँ? Technically, yes. So the bigger advantage, or the biggest advantage when we say functions would give us, is the ability to reuse. Obviously, ability to reuse makes much simpler sense कि भाई हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है कोड लेके प्रोसेस करके उसे बार-बार यूज करने का. So that's reuse first one. Apart from that, there is a concept called modular code. Now modular coding क्या? अगर मैं बहुत सारे छोटे-छोटे फंक्शन रखूं, बहुत सारे छोटे-छोटे फंक्शन रखूं, खुद सोचो कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, खुद सोचो लॉजिक कैसे चलता है. I have several small functions, one after another, and the logic remains is very simple. Functions लो, वर्क करो, प्रोसेस करो, फंक्शन लो, वर्क करो, प्रोसेस करो. मेरे नीड के हिसाब से मैं फंक्शन ब्लॉक्स डाल सकता हूँ. पहले ये डाल, फिर ये डाल, फिर ये डाल. See it this way. आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत लोग फोटो खींचने के बाद फिल्टर्स डालते होंगे होलसेल में. No, there are different filters having a different effects working with it. कोई स्किन स्मूथिंग होता है, कोई खुद को काला करता है, गोरा करता है, बालों के कलर पता नहीं क्यों चेंज कर देता है, कोई कुछ फिल्टर्स तो ऐसे जो इंसानियत को ही चेंज कर देते हैं. तो whatever the filters are, but इनका order you decide. No, I remember few days back cousin आई थी तो उनकी दोस्त लोग कुछ मस्ती कर रहे थे. I was working on their code. Out of no blue, bro, तू लड़की होती तो बहुत क्यूट दिखता. बोला where that comes from. Then there is apparently some Instagram filter which they were playing around, जिसमें मर्द औरत बनता है और औरत मर्द बनती है. I don't understand why, but ठीक है. Then I'm clicking and telling me, बोला हाँ रे शायद कोई देखता, अभी तो कोई नहीं देखता, रख दे. The logic I'm trying to say. Now ये filters समझो एक function है. If you have a series of filter coming in, you realize पहला filter आपने डाला मे बी आंखों का कलर चेंज करने, that's one function. The data came from that was put to another function. Maybe you wanted to make it more brighter. From data coming back, you give it to another filter. So जब भी हम वो filterations का बात करते हैं या Instagram programming का जो हिस्सा है पीछे का या filters creation का जो आजकल इंडस्ट्री आ चुका है, इन सारे चीजों में हम लोग अल्टीमेटली छोटे-छोटे फंक्शंस ही बना रहे हैं. जो आपका कैमरा कॉल करता है, फिल्टरेशंस होता है, प्रोसेस होता है, वो आपको स्क्रीन पे दिखता है. तो इफ यू सी द टेक्निकल साइड ऑफ इट, यस यू हैव बीन डूइंग इट. रिसर्च साइड पे फंक्शंस का अपना इंपॉर्टेंस है. क्यों? वी नेवर राइट द मैन कोड. व्हाई? मैन कोड एक्चुअली गेट्स अस द डेटा. मैन कोड एक्चुअली गेट्स अस द डेटा.
बट जब उस पर फिल्टर होता है, डेटा फिल्टरेशन, तो हम लोग अलग अलग फिल्टर्स लगा के देखते हैं कि पहला फिल्टर डाल, क्या डेटा आ रहा है देख, दूसरा डाल, तीसरा डाल, एंड फाइनली व्हाट. सो एडवांटेज इज समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर वर्क्स. पहले एक हुआ, फिर ए, फिर सी, फिर डी. मे बी somebody will say अमर बी डाल, ई डाल, एफ डाल. That kind of coding would always work with this concept of coding is called modular coding. यानी कि यहाँ पे पूरा कोड कभी डेवलप नहीं होता, छोटे छोटे फंक्शंस डेवलप होते हैं नीड के हिसाब से. नीड के हिसाब से हम लोग अप्रोप्रिएट फंक्शंस कनेक्ट करते जाते हैं. दैट्स क्रिएट द बिगर पिक्चर. सो फंक्शंस टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक does not make sense for stage 1 कि सर कोड लिख के बाहर से कॉल करना है क्यों. सर चल रहा है ना? मेरी हाँ, तो हो गई है। का हुआ सर नहीं का कुछ सर प्रॉब्लम, का गया, सर गया, लाइट गई सर की. हमारे से लेफ्ट हो गया. वेट वो ज्वाइन करेंगे. वेट You guys, I'm back. Sorry, power issue. So coming back. So as we were talking about functions, बस एक basic means वही है कि हम लोग कोड लिख के reuse कर सकते हैं. Then there is an exponential thing which Python can do. उसमें से एक चीज जो हर programming language claim करता है, recursion. Function calling itself is a recursion as we tend to call it. तो recursion एक काफी important चीज बन गया. Apart from that, पाइथन का अगर बात किया जाए तो पाइथन में तीन चीजें हैं जो फंक्शंस को अलग लेवल पे लेके जाती है. दे आर कॉल्ड एज इटरेटर, डेकोरेटर एंड जनरेटर. ये एक टोटल अलग कॉन्सेप्ट है which you would be using in terms of when we go with functions but on an advanced level. Third thing, Python में functions by default support overloading. So what's overloading? Ability to operate on multiple data types. So yes, we do have that option. क्यों? डायनामिक कास्टेड है. तुम एक फंक्शन को जो भी डेटा दोगे अप्रोप्रिएटली वो उस पे एक्ट करेगा, बट डेटा टाइप वी वुड नेवर डिफाइन. तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में आगे जाएंगी. दिस वाज जस्ट अ क्विक प्रीकैप ऑफ व्हाट आई एम गोना कवर फॉर टुडे बिकॉज़ थिंग्स आर गोना बी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी क्लियर विद इटरेटर, जनरेटर, डेकोरेटर हाई राउंड इंटरव्यूज में टारगेट किया जाता है. With example you should be prepared with. So iterator, generator, decorator क्या है? Concept totally नया है and to be very precise, generator जैसे concept सिर्फ Python के पास है. Decorator was initiated by Python, अब absorb किया है typecast and Java जैसे languages ने, तो making it bigger. Document string, which was a very new thing introduced by Python and then taken it. So these are some of the points you have to watch it for. अब बेसिक से शुरू करते हैं. बिफोर दैट, एनी डाउट, एनी क्वेरी विद द एक्सप्लेनेशन? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? पीपल क्लियर? पीपल गिव मी थम्स अप इफ क्लियर. सुपर, चलो लेट्स ट्राई टू गो अहेड. अब अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शंस का, इफ वी कैन टू टॉक अबाउट फंक्शंस, लेट्स गेट वन थिंग क्लियर. लिखते कैसे? आई मीन सर बोल दिया आपने, हमने मान लिया. हाउ वुड यू राइट अ फंक्शन? नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल. इन पाइथन फंक्शन इज रिटन विद अ def कीवर्ड. def name of the function जो भी आपको नाम देना है, followed by the bracket, followed by the colon, and don't forget, like everything else in Python, no opening closing braces, only the indentation. You'll be writing the code, whatever the code is. उसके बाहर पैरेलली जो भी लोगे तो हम लोग बात करेंगे outside function. So yeah, this is how we are working with, this is how we are operating with. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का
logic है. So if you tend to say this, chalo, before any delay, let's start with the collab and to work with. Now today I won't be giving you any break, but we will be going till 11 at least. So starting with the collab, give me a minute. Taking you along with me to collab and then sharing the link, don't worry. Okay, so let's make it 6 functions. तो जैसे मैंने कहा हम लोग def कीवर्ड यूज करके फंक्शन लिखना शुरू करते हैं. Let's call it my fun colon. As you can see, indentation automatically आ गया. I can just say print. Hi, I am function. Up to understand this in a better way, let me write a script which says print. Script started. फिर सर उसको बुलाओगे कैसे? आपको कोई बुलाता कैसे? नाम से? That's what people would call you. अमर. मेरे केस में अमर, अमर पंचाल, अमर सर या जो भी मेरा पेट नाम मेरे ग्रुप में रखा गया है. So the logic is very very simple. I will call it my fun. जो मैंने नाम दिया. And then we go with the script again and say script. And it. And one more print maybe to work with. So if I run this, it is obvious to happen. It is obvious to happen the way we are gonna operate on. कि भाई data होगा, process होगा, work करेगा और वापस आएगा. So if you see the bigger picture for this, if you see the bigger logic for this, हम लोग ने function लिखा, def से fine. हम लोग ने info निकाला, process किया और info खत्म करने के बाद वापस control किया. The most important thing by now you need to realize is the flow which we are throwing on or the way we are working with the flow. So just a minute, Connor. So when we tend to work with this, when you tend to operate with it, जरा समझो कि इस चीज को हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से operate कर रहे हैं. Back screen. So how we are talking about क्या है, कैसे है, किस तरह से है, let's try to work it out. Okay. Now as you can see with the code, matching कम कर दे. Okay. Now let us understand. हम लोग step by step process कर रहे हैं. The entire execution takes place in one step. First, script started. Makes sense? Script started. Then my fun. The moment you say my fun, guys, the control is gonna go out. Is gonna call this function. Function gets executed. That means the line my function. So hi, I'm function. Followed by जब इसका काम खत्म हो जाएगा तभी क्या? It'll go straight away to the next line. ये एक basic फंडा है जो दिमाग में याद रखना. When function called, control goes to the function. Function gets executed. Then the control goes to the next line. That's how the system is supposed to work. That's how the system would work. Everybody clear with the logic? Any doubt? Any query? People clear? Super. Okay. अब यहाँ तक एक फंडा तो हम लोग का क्लियर था. हम लोग ने बोला ठीक है फंक्शंस ऐसे चलेंगे and we operate with it. Make very clear sense to us. But मैंने कहा था by default functions are overloaded. By default functions are overloaded with reference to parameter. ये line लिख लो please. In Python, by default functions are overloaded. In Python, by default functions are overloaded. Functions are overloaded with reference to data type of parameter. With reference to data type of parameter. ये थोड़ा interesting factor है. So let me go to the code straight away. अब ये interesting क्यों है या कैसे है वो अब समझ जाओगे. अगर मैं बात करता हूँ
अगर मैं बात करता एक नॉर्मल फंक्शन का और वर्किंग का, जरा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो. I'm writing a normal function to be very precise, which will add 2. So def add parameter 1 comma parameter 2. So don't we specify data type? My dear, we are in Python, we don't specify that. So we'll say print. मैं जानबूझ के टारगेट कर रहा हूं डेटा टाइप. सर कैसे? Type P1 P2 followed by bracket. You can print addition comma P1 plus P2. मतलब सब छोटी सी चीज के लिए इतना why have we gone this far for it? ये छोटा लग रहा है, but I'll tell you one thing. मैंने एक बार लिखा है, ये बार बार यूज होगा अलग चीजों के लिए. सर एक मिनट, अलग चीज मतलब? डोंट वरी, मैं हूं ना. So you'll be putting this सर. और क्या बचा? बेस्ट ऑफ लक. सर एक मिनट जरा स्लो. हम लोग ने ऐड लिखा, आप ऐड कर रहे हो, और ये मस्करी क्या है? I mean, आपने एक ही ऐड पे इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों चला दिया. जो स्टेटमेंट लिखा है जरा वापस एक बार मेरे लिए प्लीज पढ़ो. Read the statement which you have just written. That Python overloads parameter with reference to data type. So if you want to see this, what is its capable? मजा देखो. So if you see the bigger picture, यार ये इंट के साथ भी चला. इंडेंट 30, फ्लोट 45, string Amar Panchal without space obviously, but again this is one of the specialty Python would give you. Why? Dynamic casting. अब इसमें ना बुद्धिजीवी कोई हो गया, वो would ask a question. सर एक string और एक int दिया तो string और int add नहीं हो सकता, उनका कास्ट का प्रॉब्लम है, they cannot come together, so they will always give error. Always. तो सर overloading would only work with the data type which supports that particular operations. Otherwise नहीं. अब जैसे कि अपने केस में addition is supported by int, float and string, तो ये तीनों के लिए चल गया. If you give something else, now for example, कुछ तो बुद्धिजीवी होंगे जिन्हें अंदर से इच्छा होगी, सर ये चलेगा क्या? सर एक मिनट, क्या हुआ? True is taken as 1, false is taken as 0. 0 plus 1. 1. That's what. But you realize the beauty, what I love to look at is right now, एक function. मैंने कितना लिखा? एक function. But you see that one function work with int, float, string and boolean. और क्या चाहिए life में? Overloading. Okay. Overloading is a phenomena जो आगे जाके एक नए नाम से सुनाई देगा तुम लोग को when we go with the concept. So be careful. We call it polymorphism. Polymorphism, ability to exist in multiple form. Ability to exist in multiple form. Now, when I say polymorphism, ability to exist in multiple forms, is one of the property which we'll be exploring in depth when it comes to object-oriented programming. Ability to exist in multiple form gives a very big advantage to us because मानो ना मानो कभी ना कभी हम लोग सब polymorphic है. मतलब do you exact way in exact situation everywhere with everyone? Be honest, people. Yes or no? What do you feel? डालो chat में. What do you feel? तुम लोग exactly सबके साथ exact एक जैसे एक ही तरह से behave करते हो? हाँ या ना? Waiting.
I love the honesty. No, obviously no. एक सिंपल सा पॉलीमॉर्फिक वर्ड है, मैं हंस के बोलता हूँ, एक पॉलीमॉर्फिक वर्ड है कॉल्ड हेलो. Have you realized one thing? Your hello changes on the basis of whom you are talking to. That's very cute and that's very funny. That's human. You know, याद करो तुम लोग दोस्त से गप्पे मार रहे हो, नीचे हो और मॉम खाने के लिए बुला रही है, पता नहीं क्यों अपने अंदर का एंग्री बर्ड जागा रहता है. ओके, सो इफ शी कॉल्स अप अगेन एंड अगेन, वो भी आपका खाना आपके लिए वो बेचारी बना रही है, बर्ड अपना तरीका क्या होता है? हेलो, हाँ आ रहा हूँ, रुको. ठीक है भाई, क्या बिगाड़ा है, तेरा ही खाना है. यही चीज थोड़ा उल्टा करो कि तुम असाइनमेंट कर रहे हो और लाइफ में कोई केमिकल लोचा है जो कॉल करे, याद है अंदर से ऐसे शहद आता है बाद में. हेलो, आई हैव सीन माय ब्रदर डूइंग दिस. आई मीन द वे, नो, अदर डे ही वाज टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड apparently. ये इसका पूरा बॉडी ऐसे रिदम में था. हाँ 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 हाँ. मुल्ला, जस्ट फॉर लेटिंग यू नो दैट वाज नॉट अ वीडियो कॉल, दैट इज अ ऑडियो कॉल. तो इतना चहक क्यों रहा है? क्या भाई, मुझे नहीं, वो तेरा रिदम ना पूरे बॉडी में झलक रहा था. बोला जरा शांत. द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल. So polymorphic, we are that one word hello changes, and that changes on the basis of whom. So you're right, Ratna, what is polymorphic? If somebody asks you in an interview, it is the ability to exist in multiple form. One of the way polymorphism is implemented is overloading. Overloading. Polymorphism is ability to exist in multiple form. One of the way of giving you polymorphism is overloading. What is overloading? Ability of Python to dynamically support different data type using single function. Ability of Python to support different data type over one function. Clear? Everybody clear with this? अब ठीक है यार, मुझे बोलो एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा लॉजिक है. स्पून का यूज क्या होता है? स्पून, चम्मच. What is the use? Anybody could help me, please? What's the use? स्पून का यूज क्या होता है? To scoop something out. Taking bite by bite. Very good, very good. Knife? To cut. To cut. मतलब सर सुबह क्या ब्रेकफास्ट करना है तो करके आओ, क्या पूछ रहे हो? Now the logic is everything has a predefined use. Similarly, when I write a function, the first question I come across is what that function is for. अब कुछ functions तो समझ में आते हैं when I say add, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है add का काम क्या है. What if I cannot make it out what the function is for? Under that case, there is a concept called document string. Again, the term which I'm trying to talk on is, guys, document string. ध्यान से समझने काम कर. Document string. Document string, I mean, what is the use? It's the first line written after definition in single, double or triple quote. Single, double or triple quote. Function definition के बाद लिखा जाता है that allows user to understand what function is. Okay, चलो मैं इसी चीज को थोड़ा इस तरह से elaborate करता हूँ. साइड में आ जाता हूँ. So what are we talking about? Now pay attention. So when I say my fun and wait, तू जाने, तेरे को मालूम, मेरे को नहीं मालूम उसका क्या कर रखा है. What if I want to give user some kind of help which will allow him or her to understand what my function is doing? You can do it using something which we call as document string. तो सर क्या करोगे? Document string, single quote. So we'll say this is a demo function. बस मैंने इतना लिखा और छोड़ दिया. इसे रन कर लेते वापस एक बार. Now at the bottom, see the fun. I'm waiting. So now I get a prompt which says this is a demo function. Sir, इसका use क्या है? Okay, उसका use मैं नीचे बता देता हूँ, ज़्यादा easy पड़ेगा मेरे लिए. अब add के लिए मैं लिखता हूँ
and prints addition. बस मुझे और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए. अब अगर मैं बात करूं तो it clearly makes it P1 P2 क्या होगा, takes two inputs and prints addition. So this is what document string is about. This is what document string is about, and we can definitely work it out. Definitely work it out. So that is how we work and we use. Everybody clear? Concept clear हुआ? क्या क्यों कैसे किस तरह से हम लोग कर रहे हैं? So document strings are क्या? Ultimately, document string is a way of helping user to understand what function is capable of doing, and we do use it multiple times. Clear? People clear with the concept? अब एक question आता है, is the document string compulsory or optional? What you will say? Is the document string compulsory or optional? People, what you will say? Optional. But हम लोग ये जरूर बोलते हैं, no, it is good to use document string for the understanding purpose. Yes, I totally agree with that. ये कंपल्सरी तो नहीं बोल सकता, बट हाँ जितना यूज करोगे उतना बेटर है ना. यूजर को क्यों तकलीफ देना है भाई तुमको? So try to use it more often so that you can work it out. With reference to industry, yes, we would like to use it most of the time. We would like to use it most of the time. So everybody clear with this? Any doubt? It should be first line of the function. Compulsory दोस्त. After declaration of the first line of function, immediately document string आना चाहिए, वरना activate नहीं होगा. And Okay. it can be in any codes, right? Double quotes. Double, triple, yeah, any. Okay. Okay. Sure. Let's go ahead with that. Let's try to understand further. तो हम लोग ने एक फंडा बोल दिया, हम लोग ने बोला ठीक है भाई, ये इस बेसिस पे चलने वाला है, इस बेसिस पे कॉन्सेप्ट चलने वाला है. सुपर, वी आर गुड विद इट. अब थोड़ा आगे का बात करते हैं. अभी तक हम लोग ने फंक्शन समझा, फंक्शन का ये फंडा दिया कि बिकॉज ऑफ पाइथन ओवरलोड कर सकता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कर सकता है. गुड गुड. अब पाइथन का और एक स्पेशलिटी जो अपने पास है, सर क्या? Now Python can support, when as far as Python is concerned, guys, it can support return. Sir, not a new thing. सालों से जानते हैं. A return statement returns data from the function to the script. A return statement returns data from the function to the script. What's a big deal, sir? Big deal is coming in. In Python, we can return more than one parameters. P1, P2, P3 and so on. More than one parameter is returned. More than one parameter is returned. और कहानी में थोड़ा twist लाते हैं. सर क्या? They are returned as a tuple. They are returned as a tuple. Oh. सर मतलब सही है, आप tuple use कर सकते हैं. Tuple use होता है. तुम नहीं करते. Python खुद करता है. यार जब डेटा स्ट्रक्चर चल रहा था, मैंने कहा था tuple is used more by Python than the user. और उसका रीजन भी बोला था, ये चीजों को मॉडिफाई नहीं होने देता, ये है रख, तो ये टपल यूज करता है. Now just to work with that, just to work with the code, people, let's go with it. मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, def min minimum, चलो पूरा ही लिख देते. ये दो नंबर ले रहा है यूजर से, and then I am returning a simple if number one less than number two, return return number one, else return number two. Makes sense, makes very sense. कुछ नहीं है सर, दो फंक्शन यूज किया है, एक आंसर दे रहा है एंड ऑपरेट कर रहा है. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज हाँ, I'll give that just a minute. बाद में भूल जाऊंगा, just give me a second. I'll do that. हर बार की तरह 3 क्लिक्स एक ही है भाई. Okay, so now going with it, people keep the collab with you guys, and now making simple minimum
मैं 2 एलिमेंट्स देता हूँ, लेट्स से I and T input and now many people find it weird to see this, but realize one thing: why to write more line of codes when you are capable of doing it everything together? So ये minimum 2 elements ले रहा है यूजर से, फायर कर रहा है, जो मिनिमम होगा वो रिटर्न कर देगा. It's as simple as that. तो चलो प्ले करते हैं. Let's put it 6 versus 28. Yeah, 22. 6, 22. 6, 22. 6 is minimum मिल गया. मतलब ये लिया, डेटा लिया, ऑपरेट किया, नंबर 1 दिया, जो आपको 6 दिखा. सिंपल. बट सर एक मिनट, आप यू आर टॉकिंग दैट पैरामीटर एक होगा तो नहीं, मल्टीपल में टपल देता है. एक होगा तो नहीं, मल्टीपल में टपल देता है. सर कैन बी प्रूव दैट? खुशी सर. अब इसी कोड को मैं रीयूज करता हूँ, इसी कोड को मैं रीयूज करता हूँ. लेट्स कॉल इट अ न्यू स्टाइल, लेट्स कॉल इट असेंडिंग. सर क्या? असेंडिंग. अब क्यू इंस्टेड ऑफ मिनिमम इट इज गोना गिव डेटा इन अ असेंडिंग ऑर्डर. तो इसे नाम देते हैं असेंडिंग या ऑर्डर. चलो नंबर 1 नंबर 2. अगर ये बोला नंबर 1 छोटा है ना अमर, तो नंबर 1 दे, फिर नंबर 2 दे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, फिर नंबर 1 दे. ओके सो सर फंक्शन का नाम चेंज हो गया, ऑपरेशन स्लाइट चेंजेस. यस. तो अब बात करते हैं हम लोग के वर्किंग का, अब बात करते हैं हम लोग के ऑपरेशन का. ऑर्डर, लेट्स प्ले दिस. उसका नीचे खास करके देखना. इफ आई से 55 and 2, have you seen one speciality? जरा नीचे ब्रैकेट दिख रहे क्या सर? so क्या? That's what the point is. Single element would remain the primitive data type. More than one element would become a tuple by default. लिख के रखो. If single element is returned, that would be primitive data. Single element is returned, that would be primitive data. Single element is returned, that would be primitive data. Single element is returned, that would be primitive data. More than one would become tuple. More than one would become tuple. एक से ज्यादा मेरे दोस्त टपल हो जाएंगे, एक से ज्यादा मेरे दोस्त टपल बनेंगे. So be very very careful to work that. Okay, simple, effective, and needed. That's what we are trying to work on. That's what we are trying to operate with. I feel people would be very clear, simple. Any doubt, any query? People clear with this? Is your doubt, people? Thumbs up if clear. Chalo, good to see. अब आगे जाते हैं. ठीक है सर, मतलब रिटर्न तो हो गया, फंक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया. I mean, sir, cool. There are 3 new features which Python function is capable of. Sir, क्या? A phenomena called default value. C से copy किया इन्होंने, basically C++. Then another phenomena along with default value is a concept called key value parameter. And third thing to talk about is something which we work with, variable size parameter. तीन नए फीचर जो पाइथन को और पावरफुल है. डिफॉल्ट वैल्यू, की वैल्यू एंड वेरिएबल साइज पैरामीटर. बी केयरफुल फॉर द एग्जांपल्स व्हिच आई एम गिविंग. दैट्स द रीजन मैं इसे हाइब्रिड मोड में आज यूज कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बार बार स्विच ओवर ना करना पड़े, तुम लोग को चीजें समझा पाओ. अब समझो मैं लिख रहा हूँ डेफ इंट्रो, बोलूंगा नाम, फिर जेंडर, फिर नेटिव. भाई मैं इतना करने वाला, मैं इतना देगा. तो प्रिपेयर अ लाइन से हाई. नॉर्मल इंट्रो सपोज किसी को मारना है, हाई आई एम
फिर जो भी नाम होगा अगेन जेंडर फ्रॉम मैंने कोई बड़ा बात नहीं किया, मैंने कहा एक सिंपल बना नाम, जेंडर और नेटिव। अब जब मैं इसे इसी ऑर्डर में दूं, that means if I intend to work with this, मुझे नाम चाहिए, फिर जेंडर चाहिए, फिर तो let's make it simple. Enter. या तो चलो rather than that मैं डायरेक्ट पैरामीटर्स दे रहा हूँ. इंट्रो सिंपल है अमर. It makes sense. I mean, simple as sir, it would simply print, "Hi, I'm Amar, a male from Mumbai." That's what you want to say. Yes, that's make it very simple. Not a big deal, no nothing. But अगर कोई जल्दी में था, genuinely जल्दी में था, तो सर क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा ये कट कर दे, फाइल्स पे ऊपर ले, ये नहीं स्क्रीन. Okay. So as we talk about, as we work with, suppose किसी को जल्दी था भाई, किसी ने बोला यार अमर मैं आगे पीछे ना गड़बड़ करके आया. True. So the logic is, अरे यार मैंने जल्दी जल्दी में ना पहले डाला गुजरात, मतलब नेटिव डाल दिया, फिर मैंने डाला क्या गुजरात से, चलो मोस्ट कॉमन नेम रमेश, and let's put then no मेल. अब अगर मैं बात करूं तो मेरे फंक्शन की पैड बच गई. आई एम गुजरात और रमेश फ्रॉम मेल, इंग्लिश का मॉडल तकरीबन. अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ यू गेव इट इन अ रॉन्ग सीक्वेंस. इट शुड हैव बीन देन नेटिव एंड जेंडर. तुमने गलत डाला तो तकलीफ होगी. कुछ कर सकते हो सर? The answer is called key value parameter. Key value parameter. What is key value parameter? What is the logic? तुम लोग जो भी डेटा पास कर रहे हो, उसे एज अ पेयर पास करो. किस चीज का? पैरामीटर इक्वल टू वैल्यू. And this can be in any order. So sir, you mean to say key value parameter means parameter can be given in any order, but as a pair of parameter value. लिख लो चाहिए तो. Key value is giving parameters in any order, but using key value pair. Using key value pair. Key value pair. People using key value pair. Very clear? This won't make sense till the time we use it. अरे यार ये बंदा ही गलत है यार. अब मैंने उसको पूछा भाई तेरा ये सब बहुत आगे पीछे जरा बोल, तो उसने बोला अमर नेटिव तो तुझे मालूम है गुजरात है, नाम ऑब्वियस है, और यार जेंडर ऑब्वियस है ना, मेल क्या थोड़ी नाम रहेगा. बेस्ट ऑफ लक. Even if I didn't change the order, but if you see, I still got the proper output. Hi, I am Ramesh, a male from Gujarat. जबकि मैंने order change नहीं किया, but parameter value pair यहाँ पे लाके दे दिए. That is a bigger point जिसका आप बात कर रहे हो. Is everybody clear? Key value parameter किसको बोलते हैं? People, thumbs up if clear. Yes. Okay. चलो, good.
So I hope people are very clear to what we work with. People are very clear to what we use. चलो अब आगे जाते हैं. सर आपने अभी इससे पहले इनपुट लेने की कोशिश की थी ना पैरामीटर में, तो अभी की पेयर में इनपुट अलग अलग से लिखना पड़ेगा हर एक के लिए. हाँ, इनपुट अलग से लिखना पड़ेगा, बट देन द फैक्टर, अगर तो यूजर को बोले नाम बोल और वो जबरदस्ती जेंडर बोले तो उसका मिस्टेक हो. तो दैट्स द रीजन मैंने वो डेफिनेशन हटा दिया और ये नॉर्मल रखा. क्लियर? ओके सर. ठीक है यार, सुपर. अब मैं इसी चीज को एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ. अमर, देख भाई, अगर तू ना बोले, नेटिव के बारे में बोले ही ना, तो बाय डिफॉल्ट गुजरात, मुंबई कुछ एक पकड़ के चलना, या जेंडर में बोलूँ ना, बाय डिफॉल्ट कैन. So that is a default value parameter. Default value parameter बोलता है what exactly default value parameters are. Generally याद रखना thumb rule है, default value parameters are kept to rightmost. Generally kept right. ऐसा कोई रूल नहीं है, but thumb rule पकड़ के चलो. मतलब rightmost में हम लोग default value parameters को रखते हैं. We'll always keep default value parameters to rightmost of our environment. That is what we work with. Second thing, they are simple. They are similar to parameter is equal to value, but this value used if user fails in providing data. मतलब सर यूजर नहीं देगा तो why do you think it's a default value parameter? If you don't specify, then I would give you what is needed. If you specify, then in that case, sorry, I really don't need to. This really don't need to. That is what the concept is. That is how the concept. So be very, very careful. Be very, very clear. That's how we work with. That's how we rate. Clear with this? The default value parameter का concept बहुत simple सा है. Parameter is equal to value used if user fails in providing data. That is what we are working. Sir, थोड़ा समझाता हूँ. Now in the above example जो हम लोग ने intro का डाला है, मैं वही copy कर रहा हूँ. So if I'm copying the exact stuff, people, let me put one more code block. Okay. Now this is a code which we talk about. We have already said it's a rightmost code and remaining. Let's say अगर native नहीं बोला तो मैं मुंबई दूंगा. मतलब सर आपने चेंज के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ native is equal to मुंबई लिखा. नहीं, calling would change. Okay. So if I say intro, suppose I say so let's talk about mail and I left data. So sir एक मिनट, आपने दो ही पैरामीटर्स फायर किए. So एक ऑप्शन था नाम, दूसरा था जेंडर. But where Mumbai has been passed, congrats. That's the default value parameter. जैसे मैंने कहा, used if user fails in providing, or I can say rather than fail, user is not providing. So default value parameter. See, I don't know about you guys, but I'm somebody who loves spicy food. So when I go to hotel and if I have to eat food, मैं पहले ही वेटर को बोलता है make it extra spicy. मतलब क्या? अगर मैं नहीं बोलता तो स्पाइसी नहीं बनाता. उनका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो बनता. अब तुम्हें ज्यादा चाहिए था, तुमने क्या बोला? Extra spicy. Similarly, no, one thing which my doctor always told me for is having extremely cold water. बचपन से आदत है. So, wherever I go to hotel and if the water is not cold enough, मतलब ice cubes मैं डाल के आधा ग्लास भरेगा, उसमें पानी डालेंगे, and that is how I like to sip my water. The logic is cold water, extreme cold. I cannot say get me extreme cold water. वो बर्फ लाके बोलेगा चूसते पर. The logic is very, very simple. How we work into picture, the logic is very, very simple. तो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू से हटके कुछ देना पड़ता है, यानी मैं जब दूं तब वो वैल्यू पास होता है. इफ आई डोंट, फंडा सिंपल है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो डिफॉल्ट वैल्यू गेट्स एक्टिवेटेड प्रोवाइडेड यू आर नॉट गोना प्रोवाइड एनी वैल्यू टू मी. सर जैसे कि अब देखो ऊपर के ही
इसमें मुंबई आया है तुम लोग के सामने, बट देन दिस गाय सेज सर पंजाब ना, बस क्या बराबर है, मैं कहा ना बोलूं. So because I gave it overruled the basic native of Mumbai. मैंने पंजाब दिया तो पंजाब लेगा, मैंने नहीं दिया था तो मुंबई लेगा. By default, that is what we are talking about. Okay, everybody clear? There are a lot of default values. Till the time you don't open up, till the time you don't speak up, the default values are followed. The time you speak, say, specify, default values would be changed. So याद रखना default value only gets operated when we do not specify value or a parameter for it. तो मुंबई लेगा. जब मैंने स्पेसिफाई किया है तो मुंबई नहीं लेने वाला, तो पंजाब लेगा. याद रखना, सिंपल yet effective. Everybody clear? Everybody clear? Simple. तो मालूम पड़ेगा. Sir, if we fail, मतलब मिडल वाला सेंटेंस लिखना भूल गए तो क्या होगा? अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर है तो डिफॉल्ट वैल्यू लिया जाएगा, वरना एरर देगा, सिंटेक्स एरर, पैरामीटर नॉट फाउंड. So if we have all default value तो ठीक है, तो तू यूज कर सकता है. बिकॉज मैं अगर बोलूं ऐसे समझ चल, खास करके भाई इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा. कंसिडर दिस वे. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन फॉर लेमैन जिसका पूरा गड़बड़ का चांस है. नन, जेंडर, other, name, unknown. सॉरी, ये तो सब आपने डिफॉल्ट वैल्यू बना दी. तो नाउ द बिगेस्ट जोक इज इफ आई से दिस इज गोना बी फन. इफ आई से इंट्रो, सर कुछ नहीं दे रहे हो. दैट्स द आइडिया. हाय आई एम अननोन अदर फ्रॉम नन, मतलब मेरे पास अपडेट ही नहीं है, मैं क्या दूं भाई. अब उसमें एक एक ऐड करते हैं. नो लूंगा नहीं यार. पहला पैरामीटर मर. सो नाउ हाय आई एम अमर, अदर फ्रॉम नन, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम अभी तक भाई. फिर I put male into picture, we come across, and then obvious है as we worked with earlier, Mumbai, and we work with Mumbai company. अब जो इसका क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ मैं ये डिलीट कर दूं. नाउ ये डिलीट करोगे तो ऐसा पंगा होगा. सर तो एक काम करते हैं ना, मैं स्मार्ट है सर, आप जैसा थोड़ी है. सिर्फ मेल और मुंबई दो. अच्छा वो स्मार्ट है, उसको समझेगा. बेस्ट ऑफ लक. नीचे देखो क्या कांड हो रहा है. हाय आई एम अ मेल, अ मुंबई फ्रॉम नन. आई मीन क्या हुआ. तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स व्हेन यू गिव, इट विल टेक फर्स्ट वैल्यू फॉर द फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड वैल्यू सेकंड पैरामीटर, थर्ड वैल्यू. तो सर कुछ सर्च करते हैं, मींस अब इसे कुछ सॉल्यूशन बोलो. कंबाइन की वैल्यू पैरामीटर्स विद दिस. सर मतलब जेंडर था ना, यू आर क्लियर. Now people fail in understanding this, hence I'm showing you. Native, you are clear ना about two things. अब मारो. तो अब उसने बराबर पिकअप किया. So he said I am unknown because नाम नहीं मालूम. बाकी मेल और मुंबई ये क्लियर है, ये याद रखना. This is a combination of key value parameter with a default value parameter. People clear? Anything you want to make notes on something? Go ahead. It's a good time. जो भी अपनी भाषा में लिखना है लिख लो. Try to operate it out.
Okay, people. Done? Any doubt? Any question? People clear till now? Everybody clear? Stage 3. Variable size. Now, the significance of variable size parameter is when you are unaware कि सामने वाला user कितना data input देने वाला है. So why unaware? Obviously. Now you think about hobbies. Now consider this way as an example. मैं तुम लोग को बोलते हैं यार एक ऐसा फंक्शन बना जो लिस्ट ऑफ हॉबीज देगा और फिर डेटा इन्फो देगा. तो डेफ हॉबीज. अब प्रॉब्लम है कितने पैरामीटर दूं यार इसमें. इट्स अ गुड क्वेश्चन. अब हर एक का हॉबी अलग अलग होता है. इफ यू कंसिडर माय डियर सिस्टर, शी हैज अ टेरिफिक हॉबीज, स्लीपिंग एंड ईटिंग. उसके अलावा नो इंजीनियरिंग तो ठीक है, हो गया है जैसे जैसे धक्के मार के. करंटली शी इज डूइंग MIS, बट हर बेसिक मोड दो ही है. भाई भूख लगा है. Whenever she looks at me, मैं ऐसे देखता हूँ. When I understand, I ask myself, Zomato or Swiggy, बोलो क्या हुआ? And her hunger is also very interesting. भाई पिज्जा का भूख लगा है. बोले भाई ये तेरा भूख कौन सा रहता है, मुझे समझा नहीं. What do you mean by statement पिज्जा का भूख लगा है? पिज्जा खा के ही जाएगा. I tried once, कि भाई ऐसे नहीं होगा. दूसरा था, इसने एक पास्ता, एक सलाद, हाफ तंदूरी, खाने के बाद भी पिज्जा ऑर्डर करवा. सो नाउ आई एम स्मार्ट गाय. गुजराती है ना, पैसा बचाना आता है. किस चीज का भूख लगा है भाई? बहन बोल दे, वो बोलेगी सो एंड सो. पहले वो लाके देने का, बाकी का पैसा बच जाता है. द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल. हॉबीज. नाउ इफ यू से हॉबी, इट इज डिफिकल्ट टू से क्या होगा. So under that case, if I say H, so that's a parameter? Yes. Sir, how many? List of parameter. That's again uses tuple. That again uses tuple. So if you are making a note, variable size parameter, likho, uses tuple system. Uses tuple system to store list. Uses tuple system to store n parameter. Don't say list. Uses tuple system to store n parameter. Now, just to prove you guys, I'm just giving you this option type of H to come into picture. The type of H to dala hua hai. I have given very clearly list of hobbies and if you go with for item in H. Okay. Now consider running this. अब मैं आता हूँ hobbies पे. Now, if I tend to put my hobbies, what I'll do is to teach, I sketch, ये लिखने का शौक है, and photography that includes selfies also. ठीक है, बहुत हुआ.
So currently I have given 4 purpose here. The first line defines everything. It's a tuple. It's a tuple. 4, teach, sketch, write, photography. Okay, जरा रुक जाओ. अब suppose somebody says नहीं यार मेरी बहन आ गई. She is gonna kill me at the times. So उसका हॉबी का लिस्ट बहुत बड़ा नहीं है. No. That exact code suddenly used for 2 and it operates with 2 things only. Moral of the story which we are working with, moral of the story which we are operating with is the system which we work. Simple. मतलब सर एक ही कोड 2 के साथ भी चल रहा है, 4 के साथ भी चल रहा है, 50 के साथ भी चल रहा है. Yes, this is what we are capable of working with. यहाँ तक is everybody clear? Variations, options, ठीक है. Is everybody clear with what we have done, how we have done? People, give me yes in chat so that I can understand. Let me count how many people are clear to work with. That star is the important thing, right? That's a star is syntax, for- my dear. That's a syntax. आपको देखे ही चलना पड़ेगा. So it can Okay. we can give number of any number of parameters there because of that star. Yes, definitely. Yes. Okay. Okay. One more thing, guys. You cannot use multiple variable size parameter in a single definition. Obvious है ना? दो डाल दो वेरिएबल साइज पैरामीटर, कौन क्या स्टोर करेगा? वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का हालत हो जाएगा. So we will only keep one parameter, one variable size parameter when it's to be used. We cannot have multiple variable size parameters. Okay. हो सकता है there is a way of doing it. Again keyword parameters use करना पड़ेगा, but we try not to do that. We try not to do that. Everybody clear? फंडा समझा? अभी तक का सब क्लियर है होपफुली, बिकॉज यस करीबन 29 पीपल 30 पीपल हैव सेड यस. बाकी के 30 क्या कर रहे हैं? वैकेशन मोड में अभी भी सोच रहे हैं निब्बा निब्बी. पीपल, आई होप इट इज क्लियर. बोलने के बाद कुछ लोग जागे. वेरी गुड. ओके, सो चलो, फॉर अ व्हाइल वी आर डन फॉर द डे. व्हाई फॉर अ व्हाइल? बिकॉज हाँ आगे भी टॉपिक है. बिफोर दैट अब तुम्हारा एक एक सिस्टम चालू हो. So what I want, addition to add an elements given by user. Then using default parameter use power function such that power function use करना है. सर करना क्या? Such that if user say power 2,3, that would definitely give you 8. But if we say power 2, you give you 1. सर एक मिनट, ये कैसे आएगा? 2 raised to 0 कितना होता है? By the way, maths. 2 raised to 0 is 1. understood. That's the second thing which I want to work with. And the third thing which we'll be working with, return let me put it this way. सर ये आपने कोड किया है, आगे देखो. चार चीजें. कोलैब का लिंक आपके पास है. कोलैब लिंक्स पे क्लिक करो, ये क्वेश्चन कॉपी करो और इम्प्लीमेंट करना चालू करो. पर क्वेश्चन 5 मिनट्स. मैं 5-5 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन देते जाऊंगा या सॉल्व करते जाऊंगा. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इन अ सीरीज,
addition to add n elements given by the user. तो तुम एडिशन को कॉल करोगे ब्रैकेट में 10, 20, 30 दोगे तो आंसर 60 दे देगा. 10, 20 दोगे तो 30 दे देगा. 10, 20, 30, 40 दोगे तो 100 दे देगा. यानी कि जितने पैरामीटर्स पास करोगे मैं उतनों का एडिशन निकाल के दूंगा. सिंपल है. Do this. Good. दोस्त इसे और छोटा कर सकता है. Code is good. याद है we have direct methods also. Think about it. Okay, pretty nicely done, most of the fellas. Good. Was there a timer as such? No. My turn. People,
वॉच इट केयरफुली, जरा रॉन्ग नहीं है, बट हाँ शॉर्टकट्स अवेलेबल है। तो सर क्या डेफ एडिशन बनाओगे? यस, followed by asterisk. Let's say call it a as a parameter. You will simply say print total of comma len of a comma elements this comma a. Let's run this, let's play with it. सर एक मिनट, ये तो सीधे बिल्डिंग मेथड है, मैंने थोड़ी बोला था मत यूज करो, मैंने इसलिए क्लियरली बोला था कि यूज इट प्रॉपर्ली। तो अगर इसका बात किया जाए तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। इफ आई वर्क विद, I'll say addition bracket 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50 and play with it. Goes up, total of elements is 150. अगर इसमें से कुछ कम कर दो बीच में and play with total of 4 elements 120. Simple, as simple as this. Everybody clear? आप लोग जिन्होंने मेहनत से फॉर लूप लगाया था, I'm not saying they are wrong, I'm not saying they are wrong, I'm just saying there is a shorter way of doing also. They are right, जिन्होंने फॉर लूप डाला I in sum plus equal to right, वो छोटा तरीका भी है। My target over here is not to teach you for loop, but to teach you the fact that variable size parameter ऐसे चलते हैं। I hope people are clear. People clear with this? Go ahead for the next one. वो तो 2 लाइन का कोड है, I mean practically 2 लाइन का है। Why? Because मुझे सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर्स को समझाना है। तो def power x comma n equal to 0, ठीक है सर। नीचे क्या करोगे? सिंपल है, यू विल से प्रिंट x रेस टू n। अब इसमें से x डेटा है, n डेटा है, कॉमा डालो, रेस टू n is and we play with. So we call it power 2 comma 4. Let's play. 2 raised to 4 is 16. Make it simple, very simple. Similarly, when you work with, अरे मैं देना भूल गया अमर, just 0, this one. Simple, सरल। इसमें भी सिखाना ये था डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर, ये नहीं था, ये तुमको आता है। Everybody clear till this point? Yes, no, waiting. Okay. हाँ, अब another 5 minutes precisely given for the min one, वो भी तुमको एक्चुअल में कोड नहीं करना, you just need to be smart enough. तुम्हारे पास min ऑलरेडी है, याद है? मेरे ही कोलैब में ऊपर जाओ, min मिलेगा, min मिलेगा। तो सर काय को दिया? I had a reason. I had a reason. तो अब जरा सोचो क्यों? एस्ट्रिक एज यूज नहीं किया इसमें। could not get you buddy, जरा वापस बोल, मुझे नहीं समझा। Buddy is writing, okay, h तो भाई पैरामीटर था ना, anything can be done। आप a यूज करो, b यूज करो, c यूज करो, कुछ भी, वो पैरामीटर है, उसके आगे स्टार दे देना तो वेरिएबल बनेगा, याद रखना। वेरी सिंपल स्टोरी, वेरी सिंपल स्टोरी।
In 2 more extra minutes. तीन अलग अलग क्वेश्चन है, सबका थिंकिंग एक पे मत ला। ये वेरिएबल साइज पैरामीटर है, ये डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर है। अगर वेरिएबल साइज यूज करना है तो ही एस्ट्रिक डालेगा। यहाँ पे जब नॉर्मल यूज करना है तो वाई वुड पुट एस्ट्रिक। अलग अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो। Be quick, people. Be quick. Sarvesh, go through the question carefully. The current question which we are referring to, मैंने clearly mention किया यहाँ पे. Return minimum of 2 elements. ये कोड मैं पहले लिख चुका हूँ. If you go in my Colab, starting में ऊपर मिल जाएगा. Use it for finding minimum of 4. Okay. So be careful. How? मैं जान पूछ के wait कर रहा हूँ because this is one question which is repeated in Infosys paper back to back 2 years. Okay, that's one question which they love to give because this is one thing which you should know. See, I'll help you out. Everybody. ऊपर जाते हैं फुल स्विंग में. कहाँ गया मेरा? कहीं ना कहीं मेरा मिन होगा. Here. मिन है ना, अपना प्यारा सा मिन है. यही यूज करना है और मैं यही यूज करूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात. बट इसको यूज करके मिनिमम ऑफ 4 ढूंढना. This is the question about. I give you more 2 minutes to think about it. नहीं, मैंने कहा ना फंक्शन चेंज नहीं होगा. 5 मिनट ले लो, but I want you guys to think on this. I want you guys to think on this. Think.
Everybody is very sweet. After changing the function, you didn't got the point. You're not supposed to change the function. Question. कोडिंग से ज्यादा presence of mind का है. Think. छोड़ दो. ये तुमसे ना हो पाई, रहने दो. The problem is we all tend to think about problem on XYZ. The problem is ABC. Sir, what lecture हो गया? Answer दो. Have anybody thought about this? अब आधे लोग सोच रहे होंगे ना, हाँ मैंने सोचा था सर, मैं सच्ची करने वाला था, सिर्फ किया नहीं. And just give a print. It's as simple as this. Problem? अपना thinking ना aeroplane उड़ाने का रहता है. So think about it. You know, this is one joke I remember had happened with me. Puna and I have a very special relationship. They don't get along with me. I don't get along with them. It's a very cute people although. Now I remember Pune mein I was trying to Nashik se Pune जा रहा था. So I crossed back-to-back centers के ये थे ट्रेनिंग से. तो एक पुणेकर को मैंने पूछा, म्हणे रस्ता पुणे जाणार, रस्ता कुठे नाही जात, तू इथेच राहतो. मला मी या रस्त्यावर गेलो तो कुठे जाणार, पुणे. तो वैसा ही आंसर है. Sorry, but that's exactly what is happening. It's very simple. Minimum. मैंने क्या लिखा है पढ़ो. Return minimum of 2 elements. Use it for finding minimum of 4. मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, विन ऊपर है, ढूंढो, यूज करो, यहाँ तक कि पेस्ट करके भी रुका. पब्लिक मस्त वेरिएबल साइज. तुम लोग एक चीज सुनते हो ना, हम लोग का हालत कैसे होता है मालूम. एक नया चीज सीखा है ना, हर एक में उसको घुसड़ने का ट्राई करेंगे. अरे सॉल्यूशन उसमें ही होगा. नॉट नेसेसरी. द सॉल्यूशन वाज हियर. वेरी क्लियर. इंफोसिस में ये इंटरव्यू पेपर्स अगर देखोगे तो बैक टू बैक 2 साल ये पूछा गया. They just want to know how well you can put into. So this is the reason I'm keeping it over here. Everybody clear? वरना तो सिंपल है, min statement अपने पास है, मैं पूरा टपल लेके min मार के खत्म कर सकता हूँ. But no, the question was very precisely without changing this, try to get minimum of 4 or 3, and this is how you would be doing it. I hope people are clear with this. पंडा समझा? कोई doubt, कोई query? Anybody wants to ask anything? Sir, what if we want to compare n numbers? वापस बोल. अगर हमें n नंबर में से निकालना होगा मिनिमम, तो कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन क्या था? सर 2 में से 4 निकालना. हाँ, तो सिंपल है. इसके लिए ये सॉल्यूशन है. n से निकालना होगा तो तेरे पास min करके ऑप्शन है यार. यू हैव अ बिल्ट इन मेथड कॉल्ड min. हम डायरेक्टली टपल सेट या लिस्ट पे डाल के मिनिमम निकाल सकते हैं. तो व्हाई आर वी इवन कोडिंग दैट? समझा? आगे ला. ओके सर. नहीं समझ गया. ओके, ठीक है. So this is what we are working with. This is how we are operating. तो ये तो बेसिक्स का हम लोग ने बात करी. हम लोग ने कहा ओके फंक्शन ऐसे चलता है, ऐसे वर्क कर सकता है, ऐसे ऑपरेट कर सकता है. गुड, वेरी गुड. अब बात करते हैं वो 3 चीजें जिसके वजह से पाइथन फंक्शंस को अलग लेवल पे लेके गया. उसमें से एक तो बहुत बेसिक है जिसे हम लोग इटरेटर कहते हैं. So now I'm going to talk about 3 phenomena called as iterator, ये iterate करने के काम आते हैं. Then there is generator, ये generate करता है. And then there is decorator. So when you talk about these 3 things tend to appear in a quite different way. Iterator, generator, and decorator works in a different way, works in a different operation. So be careful to work with, be careful to use it. So iterator, generator, decorator, 3 अलग-अलग चीजें, 3 अलग-अलग concepts पे चलती है. Now what we have to work with? Iterator. तुम्हारे पास list of items होगा, उस पे iterate करता है, one after another.
Generator, on the other case, is a specialized functions, and decorator, on the way, is a function within a function. Sir, एक बोलो. पहला line लिखो. Iterator allows user to iterate over collection. Allows user to iterate over collection. Iterate over collection. Allows user to iterate over collection. Just a minute, guys.
Okay, sorry. So as we say, we have two iterator will allow you to iterate over or iterate over a sequence or a collection. What do we mean by this? जरा concept पे समझते हैं. अगर मैं एक list बनाऊं, let's say A is equal to, now this can be any collection, as I say, this can be any collection as we work. So एक collection बन गया. Now understand, iterate करने के लिए तुम लोग को iter connect करना पड़ता है. सर क्या? I say value is equal to iter bracket A. तो सर ये कर क्या रहा है? ये इटरेट करने के लिए इटरेटर बनाया जो मैंने कनेक्ट किया. सर इटर करने के लिए वैल्यू बनाया, इटरेट किया जो आपने कनेक्ट किया. बट सर वैल्यू क्या है? वैल्यू इज द टर्म जो मुझे एक एक करके इसमें से डेटा उठा के दे. सर लेट्स मेक इट वी ओनली. अब जरा देखो, इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड. 10 है. सर दैट्स अ फर्स्ट वैल्यू, राइट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दी लास्ट. इसके बाद एक्सेप्शन आएगा. कांग्रेट्स, स्टॉप इटरेशन कि भाई मेरे पास डेटा नहीं बचा. सो आई रिपीट माई सेल्फ. इटरेटर करता क्या? दो स्टेजेस में काम करता है. एक, आपको जो भी एक एक करके देना है उसे पहले इटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उस वेरिएबल को नेक्स्ट फंक्शन में डाल देना पड़ेगा. जब जब नेक्स्ट बोलोगे, नो बहुत बार होता है, याद है इन वाइवा, जब मैं प्रोजेक्ट वाइवा लेने जाता था कॉलेजेस में, आई रिमेम्बर मेरा एक ही टाइम पास होता है एंड टेल मी एंड तो मजा आता है. दैट्स अ नेक्स्ट. वो पब्लिक बोलते जाता है सो एंड सो फिर होता है. और याद है बहुत बार, एंड आई फाइंड इट वेरी फनी व्हेन दिस हैपेंस, आई स्टॉप माय कन्वर्सेशन. कभी ना कभी दोस्तों के साथ हुआ गया है वेयर यू डोंट हैव एनी डैम टॉपिक टू टॉक ऑन एंड फिर एक अजीब सा स्टेटमेंट होता है दोनों के साइड से, और बता, ऑल गुड, और बता. मैंने और क्या बता? अगर मेरा आदत है, अब यहाँ पे तो ना मैं अपना शैतानी, अपना मस्ती बहुत कंट्रोल करके तुम लोग को सिखाता हूँ. इफ आई इंटेंड टू बी मी, ये ट्रेनिंग कम और कॉमेडी शो ज्यादा रहेगा. that's how I tend to trouble my friends. The moment last time somebody did this to me, Amar, और बता. You know, hyperthreading has started in Java 15 and we can actually connect cow cluster of workstation and that then improves efficiency of code by 25.2%. तो क्या बोला तूने अभी अभी? You only said और बता, तो मेरे को जो बताना था मैंने बता दिया. The logic is similar. So the next works in a very simple way. A, which is a sequence of elements, gets connected to iter. Iter एक built-in function है. उससे कनेक्ट करके तुम लोग को एक वेरिएबल मिलेगा. उस वेरिएबल को जब भी तुम नेक्स्ट बोलोगे वो आगे आगे का बोलते जाएगा. सर तो ये इट हैज टू बी लिस्ट, टपल, सेट, एनीथिंग कैन बी कनेक्टेड. छोड़ दो. तुम लोग अगर सीक्वेंस भी अगर देते हो, मतलब ये तो लिस्ट था. अगर अल्फाबेटिक ना, कुछ लोग ना ये ट्राई करके आते हैं कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बेस्ट ऑफ लक. मजा आया देखने में? So any sequence of characters, any sequence of data, you will get with this coming into picture one at a time. Everybody clear? List, tuple, set, string. इन चारों चीजों को आप कनेक्ट करके डेटा आगे दे सकते हो. That is the job of iterator. Everybody clear with iterator? Give me thumbs up. Everybody clear? चलो super. तो ये तो iterator. The concept of iterator works in a very simple manner, effective and manner. ठीक है, super. Let's talk about one more step. अब जब iterator से आगे जाते हो, when you tend to talk with iteration and working with it, next question is generator. Why it is called generator? Basically एक चीज याद रखना guys, it's a function. It's a function. सर एक मिनट थोड़ा दिमाग लगाने दो. अभी अभी आपने जो किया वो आपने बोला कि सीक्वेंस को कनेक्ट करके करता है. ये टोटली नया कॉन्सेप्ट और टोटली अलग चीजें हैं. कभी कभार याद है हम लोग को चीजें रुक रुक के चलानी पड़ती है. Now this is one need where we need to see the result and then rerun. See the result and rerun. अब ये कॉन्सेप्ट probably at your level we don't do that. At our level we do it all the time. Why? Since मेरा ज्यादातर काम अब रिसर्च बेस्ड होता है, so उसमें अगर डेटा आया, एक पास फिल्टर कर देख क्या आ रहा है, ओके. सेकंड पास रन कर देख क्या आया,
थर्ड पास रन कर, तो हम लोग एक एक पासेस में करते हैं, रन, रुको देखो क्या हुआ, रुको क्या हुआ, रुको क्या हुआ, and that kind of things can be done extremely well using a concept of generator. अब generator, as I said, generates the value, does not iterate. Generator generates the value. तो सर इसके बारे में क्या लिखेंगे, मैं एंड में लिखा था, पहले जरा देखो, def new terms. Sorry, this is what happens when you take Java and Python trainings parallelly. So that goes with the next thing. अब क्या करोगे, न्यू टर्म करके मैंने एक फंडा बना, मैं प्रिंट कर रहा हूँ n YIELD, ये कीवर्ड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके। फिर n into 10 और n equal to into 10, YIELD n, ओके सर वापस, फिर सर वापस वही कर रहे हो, चलो ऑपरेशन में चेंज कर दो, एंड अगेन YIELN, अब अगर बात करते हैं, सर ये आप अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हो, बराबर, मैंने एक फंक्शन लिखा जिसमें बस अलग अलग ऑपरेशन करके मैंने छोड़ दिया, ओके। तो सर इससे यूज क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट न्यू टर्म्स, ओके। सर ये क्या किया, ओके। तो अगर मैं न्यू टर्म्स का बात कर लूं, वर्किंग का, तो दिस इज नॉट गोना वर्क विद द इटरेशन कॉन्सेप्ट, ओके। तो सर आपने किया वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो बेसिकली नॉर्मल फंक्शन बना दिया आपने। नेक्स्ट वैल्यू टू वर्क इनटू पिक्चर, object not iterative, just a minute. Terms, let me get it up. Function with new Python they have changed it perhaps. My mistake, मैं इससे, let's put it this way. मैं भूल गया कि मैंने पैरामीटर पासिंग किया था ऊपर, so we need to give one parameter to it. अब ये जरा चलना चालू होगा, जरा देखो। Now if you see this thing completely or together, मैंने n पास किया, which is 10 in terms of number, which is 10 in terms of number. तो पहला वैल्यू वो रन करके 10 देगा। नेक्स्ट वैल्यू जब I work with it 100, next value when we work with 100 plus 100 200, next value when we work with minus 300 because that's minus 500. So sir एक मिनट समझाओ ये exactly कर क्या रहा है, तो I'll say print first pause. Now this appears very important with reference to industry, guys. Sir क्यों? Because ultimately we require this thing all the time, जहाँ पे एक ही फंक्शन लिखने पे वो पार्ट एंड पीसेस में चले, जैसे तुम्हारा वेब सीरीज होता है, वेब सीरीज आर व्हाट, टेक्निकली मूवीज। फर्क क्या है यार, वो एक साथ 3 घंटा जाने के जगह पे हम लोग बोलते हैं एक एक धीरे धीरे जाने दे। सो दैट्स हाउ वी वर्क विद,
ऑल्दो हम लोग उन्हें मूवी की तरह ही देखते हैं. I have my friends who tell me कि भाई अमर ये वेब सीरीज मैंने पूरा नाइट में उड़ा दिया. I do ask them a question. टाइम कहाँ से मिलता है? Because it's difficult to find time nowadays. तो अब जरा देखो, मैंने थोड़ा इसे रीडिजाइन किया है, 10 पास किया है, और अब स्टोरी शुरू करते हैं एक एक पॉज के साथ. तो चलो, लेट्स वर्क विद स्टेज 1. N10 फर्स्ट पॉज हो गया, सेकंड पे जाएगा, सेकंड पॉज, थर्ड पे जाएगा, थर्ड पॉज, एंड द फाइनल फोर्थ पॉज. सर इसके बाद चला है तो एरर, स्टॉप इटरेशन. इसी चीज को अगर मैं जोश में 1000 कर दूं, प्ले करूं, नीचे का स्टोरी टोटल चेंज हो जाएगा. सो इफ यू सी केयरफुली हाउ दिस इज गोना वर्क. Still waiting. Okay. Okay. First pause 1000 up. 10,000. Second pause. Another. 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 So this is what we work with. This is what we operated. Pinning the revision. So this is how we work with generator. तो सर generator के बारे में हम लोग लिखे क्या? Save has been filled. Something is wrong. Just a minute. Just a minute. ओके, चलो इशू सॉल्व. वर्जन्स वरना गड़बड़ कर देता था. तो अच्छा सर अब अपने पे आ जाते हैं. व्हाट यू विल टॉक अबाउट जनरेटर. इफ यू वांट नोट्स राइट डाउन. जनरेटर is a function driven system. It's a function driven system. Function driven system which pauses at regular interval. Pauses at regular interval. Which pauses at regular interval. Pauses at regular interval. Wherever, take care, wherever yield is written. Wherever yield is written. Wherever yield is written. Yield is written. नीचे ब्रैकेट में डालो चाहिए तो. Yield returns the element. Yield returns the element. As a result of. Yield returns the element as a result of. As a result of. Next function. As a result of next function or a next call, whatever you want to say. Everybody clear with this concept? समझा सबको? Sir, can we use only with iter and next with this? Yes. मतलब हम इसे Because normally you इसको need to- use नहीं कर सकते. नहीं. Okay. Clear? Clear those? Yes, sir. So remember, इसका यूज क्या होता है? कभी किसी बिल्डर के पास जाओ, नो, वो तुमको दिखाता है कि भाई तुम्हारा बंगलो कैलकुलेशन सर आप अभी 1 CR दोगे,
आगे जाके 1 साल के बाद उसका इतना बनेगा, फिर इतना बनेगा, एंड ही विल शो यू ईयर बाय ईयर। सर देखो नेक्स्ट ईयर तक क्या होगा, एंटर, वापस आएगा सर, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एंटर, वो और दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर एक्सट्रीमली नाइसली डन in terms of share market, share trading, share prices, prediction by prediction. I can do this way. सर तो वो तो मैं फॉर लूप लगा के भी कर सकता है ना। हाउ वुड यू वेट, डू यू रियलाइज ये क्या कर रहा है, ये पूरा कंप्यूटेशन पॉज करता है, मतलब ये चलता है, यील्ड करके रुक जाएगा कि भाई हो गया मेरा, तू तेरा देख, वापस रुक जाएगा, तेरा देख, वापस रुक जाएगा। सो हियर आई एम नॉट यूजिंग लूपिंग पावर, आई एम यूजिंग प्रैक्टिकली अ सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग बट which operates at a regular interval. हर बार yield के बाद में रुक जाएगा, भाई मेरा हो गया तू देख ले, वापस रुक जाएगा, भाई मेरा हो गया अब वापस देख ले। So this is the difference between working with a looping system and the generator. Iterator और generator फर्क क्या है? Iterator was iterating over the value. Generator because it is generating value and giving you back. वो फर्क सबको मालूम पड़ा? Iterator was iterating over a value. Generator is generating value and giving you. इसीलिए उसका नाम generator पड़ा। I hope everybody is clear with this facts. People clear? Yes, no? Waiting. Super. सर वो एरर का फिर क्या कर सकते हैं? मैंने n दिया था ना यहाँ पे, और मैंने वो टर्म नीचे दिया ही नहीं था, तो इसलिए इट वाज नॉट एबल टू इटरेट इटसेल्फ, क्योंकि मैंने पैरामीटर पासिंग किया था, तो सिंटेक्स में गड़बड़ था। क्लियर? यस सर। So this is what we are talking about. This is exactly what we are going to work with. चलो सुपर, हम लोग वर्क कर सकते हैं, हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, नो इश्यूज, अच्छी बात है, करो। अब हम लोग एक स्टेज आगे का बात करते हैं। नाउ द अल्टीमेट फैक्टर, जनरेट। अब भैया एक क्वेश्चन आता है, जनरेटर है क्या? ये वो चीज है जो मुंबई इंडिया के हर घर में। सर डेकोरेटर नया कॉन्सेप्ट है, जुना? इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन बट ओल्ड कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू इंडिया। सर क्या? आज घर पे ना होमवर्क, मम्मी को पूछना वो ड्रॉर बता जिसमें, या वो कबोर्ड का शेल्फ बता जिसमें सारे जूने गिफ्ट्स रखे हुए, मतलब गिफ्ट आए थे, कुछ काम के नहीं थे या डबल थे, और फिर मम्मी को पूछना क्यों रखा है। बाकी समझदार हो। We all do this. We all do this. हमें इट्स अ वेरी सिंपल फंडा, जूना गिफ्ट लेने का, नया कवर डालने का, चिपका देने का, एंड दैट्स हाउ वी वर्क विद। नाउ आई रिमेंबर उनके नीचे नो भालेराव अंकल रहते हैं, अभी थे नहीं है। सो आई रिमेंबर उनके घर पे पूजा था, तभी हम लोग ने वो फ्रूट्स रखने का बड़ा बास्केट होता है, वो दिया था। दिस वाज बैक इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 और समथिंग। 2019 में घर पे एक छोटा सा फंक्शन था हम लोग के, वही गिफ्ट वापस आया हम लोग के पास, एंड मम्मी बोले ये हम लोग जैसा ही है। मेरे को आर यू श्योर? मुझे तो लगता है वही है। देन डब्बा बिब्बा देखा, देन वी रियलाइज जो डेट आता है डब्बे पे, और ये वही 2015 का ही अमर। बोले वेरी गुड। द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। वो शायद भूल गया कि हम लोग नहीं दिया था, या तो दैट इज हिज वे ऑफ सेइंग कीप योर गिफ्ट टू योरसेल्फ, आई डोंट नीड इट, व्हाटएवर इट मे बी, बट द लॉजिक रिमाइंड इज वेरी सिंपल। हम लोग सब करते हैं, याद है, जूना गिफ्ट लेने का, नया रैपर डालने का और दे देने का। अब ये तो रियल लाइफ हुआ। डेकोरेटर इसे बोलते हैं। व्हाट इज डेकोरेट? व्हाट इज आइडियली डेकोरेशन इज अबाउट? आई मीन लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। ओल्ड प्रोडक्ट, put some glitter to it and decorate and go. So that's exactly what we are trying to do. अब आते हैं थोड़े सीरियस नोट पे, मोर ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड। सर सब गया साइड में, बोलो कि एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। ओल्ड फंक्शन okay would be covered by the new function. Okay, now this phenomena comes on a serious note. Sir एक मिनट, old function within a new, मतलब समझा नहीं, क्या करोगे? Okay, मैंने कोड लिखा है सालों पहले, जो मेरा ओल्ड कोड है जिसमें सर्टेन पैरामीटर आई एम पासिंग। मुझे वो अच्छा तो लगा, मुझे रीयूज करना है, बट विद द टाइम ओल्ड फंक्शन में सीधा रीयूज नहीं कर सकता, मैं एक नया डेकोरेटर फंक्शन बनाऊं। आई विल क्रिएट अ न्यू डेकोरेटर फंक्शन व्हिच इज न्यू,
मैं एज अ न्यू आपसे डेटा लूंगा. आई विल बी टेकिंग सम डेटा एज अ न्यू, ऑब्वियसली एज अ न्यू. अब वो डेटा लेके मैं खुद ओल्ड फंक्शन को दे दूं. फंक्शन उसे कैलकुलेट करेगा एंड वैल्यू है. अब अनस्पोकन टू यू और अनटोल्ड टू यू, तुम लोग को लग रहा है नया फंक्शन लिया, नया डेटा लिया एंड वर्क किया, फाइन, कॉन्सेप्ट नया, बट द इंटरनल वर्किंग स्टिल रिमेन्स विद द ओल्ड फंक्शन. सर इसका यूज क्या होता है या any specific? I'll give you industry use to this. This actually happened with one of my team where we were working with Tele software. I was one of the part member for when Tele was created initially. So Tele से हम लोग ने work करना चालू किया. अब I remember I was called कि no at night I think it was 1:30 जब गवर्नमेंट ने GST पूरा डालने का क्लेम कर दिया था and there was a havoc. क्यों? जो भी सब्सक्राइबर वर्ल्ड ओवर थे नाउ हैड टू फेस अ प्रॉब्लम, स्पेशली इंडियन रीजन का अगर मैं बात कर दूं, हैड टू फेस अ प्रॉब्लम कि टेली में जीएसटी कैलकुलेशन का मॉड्यूल है ही नहीं, था ही नहीं. जब हम लोग ने डेवलप करके दिया था जीएसटी था ही नहीं. अब सडनली टेली हैड टू कम अक्रॉस अ इशू कि अरे यार बैंड बज गई, अमर बैंड बजी, जीएसटी कैलकुलेशन है जो हम लोग पे नहीं हो रहा. एक ऑप्शन था पूरा कोड को रिवाइज करो, चेंज करो, वर्क करो, बट बिलीव मी हम लोग रफ लैंग्वेज में बोलते हैं कोड फटना, यानी कि अगर एक चेंज किया दैट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, गया तुम्हारा पूरा कोड. फिर आफ्टर थॉट दे केम अप विद अ सॉल्यूशन कॉल्ड दिस काइंड ऑफ डेकोरेटर. बोले काम करना, अपना सारा कैलकुलेशन है ना, हाँ सिर्फ वो कैलकुलेशन से वैल्यू निकाल, उस वैल्यू को जीएसटी कैलकुलेशन से डाल, फाइनली तेरा टैली रेडी हो गया जीएसटी कैलकुलेशन. दिस वाज डन ओवर गिन के 3 दिन के कोडिंग्स में और चेंजेस के बाद पैच रेडी हो गया. जिन जिन के पास ऑफिशियल वर्जन ऑफ टेली थे उन्हें कहा गया डाउनलोड दिस पैच. पैच ने और कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्हें ओल्ड टेली के ऊपर एक कवर डाल दिया. अब ये डेटा लेता था, ये कैलकुलेट करता था, जो फाइनल वैल्यू ये देता था उसमें जीएसटी हम लोग डाल देते थे और फाइनल वैल्यू मिल जाता था. कांग्रेट्स, दिस इज द यूज ऑफ डेकोरेटर. कॉन्सेप्ट वाइज पीपल क्लियर डेकोरेटर्स क्या है? पीपल यस नो वेटिंग. पीपल क्लियर डेकोरेटर्स? thumbs up if clear. चलो, इफ दिस इज क्लियर, सर अपना तो कुछ करो, I mean, हम लोग क्या करेंगे इसमें? I'll help you out this way. Now consider this way कि बात करते हैं एक फंक्शन का जिसे कहा जाता है डेफ ग्रीट. मैं आपसे नाम लूंगा और आपसे लैंग्वेज लूंगा जिस लैंग्वेज में यू इंटेंड मी टू ग्रीट यू, और फिर मैं बोलूंगा ठीक है जो लैंग्वेज बोला है अमर उसमें नाम डाल दे और वो ग्रीट कर देगा, वो ग्रीट कर देगा. सर एक मिनट, लैंग्वेज नाम डाल के आप ग्रीट कर दोगे? हाँ, मैं सिर्फ बोलूंगा उसमें प्रिंट तुम्हें समझाने के लिए ग्रीट कॉल, बाकी का मैं कुछ नहीं करना. ठीक है, मतलब सर एक अभी भी क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग? लैंग इज द लैंग्वेज व्हिच यू वांट टू ग्रीट इन. ठीक है सर, जैसे कि ये यूजर से नाम लेगा, नाम लेगा और फिर प्रिंट करेगा. Now let me help you off with operation. चलो, since as you guys can see मैं कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा हूँ, I'm greeting. How are you my dear friend? I wanted हिंदी बेसिकली और कुछ नहीं. So मेरे प्रिय मित्र कैसे है आप? पता नहीं ऐसे बात कौन करता है, पर ठीक है. So अब मैं नाम लूंगा और यहाँ पे हिट कर रहा हूँ. Okay, just for my reference, anybody who can help me out, if I can support Hindi text, what type of character pattern or a model or a character set I'm using? Unicode. Bullseye. Thank you, buddy. Thank you. Naseeb आंसर है. Good यार. अब उसी तरह से अब हिंदी है तो सर मैं और एक सपोर्ट दे रहा हूँ. भाई डोंट फॉरगेट, वरना शिवसेना मेरे घर पे आएगा. Let's go with Marathi.
So again, I'm pushing on Marathi. Let's get Marathi over here. Marathi. Very good. माझ्या प्रिय मित्रा तू कसा आहेस? ठीक है, चलो let's go back. So this is what we work with. This is what we operate. Putting one more last code to work with. And now I'm putting Gujarati coming into. So obviously I'm going back to this and checking. Gujarati. That's Kim Cho Mara Priya Mitra, whatever it may be. So coming back, putting this. A more interesting factor which I want you guys to realize is, fine, this is a text which I am having. This is a various text in the different languages. Running each of them. ये जो तुम्हारा कोड है ना लैंग्वेज का, उसे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ. इनसे. Let's get a full screen done. अब पहले इसे शांति से जरा दो. सर आपने 3 फंक्शंस बनाए. That includes हिंदी, मराठी, गुजराती और नीचे ग्रीट बना जिसमें नाम और लैंग्वेज. नाम और लैंग्वेज कौन ले रहा है? ग्रीट. बट ये एक डेकोरेटर है क्योंकि इंटरनली तो लैंग्वेज नाम का एक चीज रहा है. सर एक मिनट, लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं आपने. Wait and watch. We support polymorphism of function calling another function and as a parameter. सर क्या बोला? बाद में दिखाता हूँ. Check this. अमर बोलता भाई मुझे मेरे लैंग्वेज में कोई ग्रीट करे अच्छा लगेगा. सो आई विल से गुजराती. ओके, टू गेट. तो सर क्या होगा एग्जैक्टली? स्पेसिफाई. So it actually worked with the concept of greet. Amar Kim Cho Mara Priya Mitra. But sir, you called lang. What is lang? Lang is the parameter which I passed. The parameter is not string, but name of the function which I want to. Decorator का ये बड़ा strength है. ये एक तरह से polymorphism है where function can be passed as an argument. Mind you that. तो सर मतलब आप जो बात कर रहे हो इसको गुजराती के जगह पे अगर मैं हिंदी बोलूं तो वी ऑल नो बाय नाउ क्या होने वाला है, बट फिर भी प्रथा है. मेरे प्रिय मित्र कैसे हैं आप? तो सिंपल. और यही चीज अगर मैं मराठी कॉल करती हूँ एंड यू फाइल माझ्या प्रिय मित्र तू कसा आहेस. Everybody clear with the concept of decorator? People clear? Yes or no? I want people to comment yes or no so that I understand. समझा कि नहीं? वो लैंग वाला एक बार फिर से बता. लैंग्वेज वाला. लैंग्वेज है बस. एक्सप्लेनेशन खत्म. जोक्स अपार्ट. देख वापस बताइए. सिंपल फंडा है. People, first of all, you need to understand the concept of Python, which it is capable of using function as an argument. सर ये क्या है? अब तुम लोग को एक स्टेप आगे बता देता हूँ. चलो. So as we work with, as we operate with people, please pay attention how I'm playing with. मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ. Let's call it def my fun. Okay, सर पहले भी था ना ये. वही. Now this happens because you fail in understanding key function can also be taken as a variable in Python. Polymorphism इसे बोलते हैं, अलग ability है ये. मैं a is equal to my fun डाल रहा हूँ. सर एक मिनट. ऐसा थोड़ी कुछ भी कर सकता है. कर सकते हैं. और मैं कॉल a कर रहा हूँ. अब जरा दिमाग लगाओ. सर एक मिनट. आपने my फंक्शन लिखा, a is equal to my fun किया और फिर a को कॉल किया. This is not creating a new function. This is creating alias of a function. सर क्या टर्म बोला? Alias of a function. Alias क्या है?
सेकंड टर्म में जो तुम लोग बोलते हैं ना पेट नेम, मेरा ही नाम है घर पे, अब जैसे कि आई हैव अ फ्रेंड जिसका नाम उन्होंने प्यार से गणेश रखा है, बट पता नहीं है, मैंने कॉल्ड अप, नो कोकोनस मींस कोकनी है, तो आई कॉल्ड, तो बोला आंटी अमर बोल रहा हूँ, गणेश है। मजा आया फोन पे, एक गण्या तुझा फोन है। मैं तो घर पे क्या बोलते हैं, अमर। बोले घर पे क्या बोलते हैं, चुप बैठना यार, हम लोग का लैंग्वेज है, इसे ही बोलते हैं ना। फाइन, तब से अब ऑफिस में भी ये सुनेगा नहीं, नो इफ यू, पहले रिस्पेक्ट से बोलता था गणेश सुनना, गणेश सुनना, अब वो नहीं सुनेगा तो मैं भी आता है एक गण्या, तो बराबर देखता है, कांट हेल्प इट, द लॉजिक इज सिंपल, आई क्रिएटेड माय फंक्शन। अब when I say a is equal to my function, understand this thing, I never created a new function, I created alias of a function, फंक्शन को जो अलग नाम से मैं बुला सकता हूँ। पहले ये फंडा क्लियर हुआ पब्लिक, ये क्लियर हुआ, यस नो, अगेन वेटिंग, क्योंकि ये क्लियर हुआ तो ही तुम लोग समझ पाओगे मैं इधर क्या कर। सर इधर डेकोरेटर है, मैं मानता हूँ, टोटली मानता हूँ, बट व्हाट डेकोरेशन हैज डन, हिंदी मराठी गुजराती वाज गिवन अ वेरिएबल कॉल लैंग, तो अगर मैं यहाँ से मराठी पास कर रहा है तो लैंग वुड बी मराठी एंड कॉलिंग मराठी फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे पास करते वक्त मराठी के जगह गुजराती पास कर रहा हूँ तो माय लैंग वुड बी गुजराती एंड गुजराती विल बी कॉल्ड। अगर मैं पास करते वक्त यहाँ पे हिंदी पास कर रहा हूँ तो लैंग वुड बी हिंदी एंड हिंदी विल बी कॉल्ड। अब अगेन रीसेटिंग माय मैसेज एंड वर्किंग नाउ, हाउ मेनी आर क्लियर, यस और नो, वेटिंग। सर वो प्रोग्राम को एक बार ड्राइव इन कर सकते हैं, जिस द फंक्शन कौन सा द एक लाइन और क्या ड्राइव करूँ रे, sorry but there is one line में क्या, what I intend to work with, hold कर, we'll use another approach। सर जो लाइन नंबर थर्ड में जो लैंग्वेज नेम है ना, वो लैंग्वेज ले रहा है या पर्सन का नेम ले रहा है? ध्यान से देख, खुद ही देख और पूछ क्या ले रहा है, कौन सा लैंग्वेज पढ़ क्या ले रहा है, लैंग्वेज का नाम क्या ले रहा है, क्या ले रहा है। अब जरा रुक जा, एज अ डेकोरेटर का जब मैं बात करूं, ग्रीट इज अ डेकोरेटर जिसके अंदर लैंग्वेज है, मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। तो ग्रीट एक डेकोरेटर है जिसके अंदर फंक्शन है, पहले यहाँ पे समझ, न्यू फंक्शन taking a value, giving it to old function, okay, so greet is a new function which is decorating old function called lang। सिर्फ इतना समझा, हाँ या ना, बोलते जा। यस सर। अब मजा देख, अब lang is a polymorphism सर, मतलब इसको समझने के लिए तुझे नीचे का ये कॉन्सेप्ट वापस एक बार देख, मैंने फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया बाय राइटिंग दिस लाइन, I simply created alias, मैं यानी my function ही होगा, बट अब उसको नया नाम मैं दे सकता हूँ कॉल a, और a को कॉल किया तो इट इज एज गुड एज is x is equal to y is equal to z। ये हम लोग ट्रांजिटिव क्लोजर बोलते थे याद है, y is equal to z, so x is equal to z, एग्जैक्ट वही चीज किया। अब मजा देगा, my function a is equal to my function, यानी my function ही a है, ए को कॉल किया यानी कौन कॉल होगा, दिस इज फंक्शन, माय फंक्शन, समझा। अब मेरा तीसरा और फाइनल फेज है, बी विथ मी बड़ी, बी विथ मी। सो इफ आई गो सॉरी, अब जरा मजा देख, अब एज यू वांटेड, अब मैंने नीचे पास क्या मैंने बोला ग्रीट अमर मराठी, ओके। अब जरा मजा देख, अमर जो कि मेरा वैल्यू है, रीच डाउन, तो ये पैरामीटर पे चला, बट लैंग्वेज वो तेरे लिए पैरामीटर था, एक्चुअली में पैरामीटर नहीं है, वो फंक्शन पैरामीटर है, यानी कि फंक्शन इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो लैंग यहाँ पे आ गया। तो सर तुमने मराठी बोला तो कांग्रेट्स, ये लैंग्वेज और कुछ नहीं होगा, मराठी हो जाएगा। सो कॉल किसको जाएगा, पहले दूसरे या तीसरे को बोल, अब पहले दूसरे या तीसरे को, सेकंड मराठी, बस वही अपना क्लू है। तो यानी कि अगर नीचे इंस्टेड ऑफ डूइंग मराठी बोलो मराठी नहीं सर हिंदी लिखो, और मैं पास कर देता जोश में अगर हिंदी, तो ऑब्वियस क्या होता, मेरा कॉल लैंग्वेज नेम पे जाता, यानी कि हिंदी लैंग्वेज मतलब अमर, सॉरी अमर हिंदी को चला जाता, हिंदी कॉल होता, वो बोलता अमर मेरे प्रिय मित्र कैसे हैं आप। अब समझा दोस्त,
Yes, sir. Everybody now clear? Yes, no, any doubts? Shoot. People clear? Then give me yes. People clear? Yeah. The argument for the greet variable, first argument name, is going to the argument of Hindi or Marathi, right? मुझे The question name नहीं समझा. argument. Sorry, come again. The name argument for the greet function, it becomes the name argument for Hindi or Marathi function, right? You are okay. The term technical language में I can say we are passing function as an argument. पहला बात. So जो lang है, जो lang हम लोग use कर रहे हैं यहाँ पे, the lang depending on what you pass, वो अलग अलग बन सकता है. मराठी, hence I said ना polymorphism. तो मराठी बनेगा. हिंदी, तो हिंदी बनेगा. गुजराती, तो गुजराती बनेगा. तो it depends totally on to how we put into. अगर मैंने पास करता हूँ मराठी है तो तेरा लैंग मराठी है और कॉल मराठी को जाएगा. अगर तूने हिंदी पास किया है तो तेरा लैंग हिंदी है और हिंदी को कॉल जाएगा. दिस इज अ बेसिक आइडिया. अब समझा? Sir, my question was that the name argument, argument for the greet function becomes the argument for Marathi function. Name. Yes, agree. That is this. Data लेके देगा old को और old process करके value दे रहा है. That's what we did ना. Okay. Clear? सर आपने एलियास का जो फंक्शन बताया ए इक्वल टू माय फंक्शन, उसको पैरेंथेसिस नहीं दिया. अगर पैरेंथेसिस दिया तो एरर आता क्या? तो फंक्शन कॉल हो जाएगा. फंक्शन कॉल हो जाएगा. We don't want function call ना my dear. देखो तुम लोग के लिए और एक काम करता हूँ. People, watch it this. We all know क्या आउटपुट आने वाला है, but फिर भी similarly print. अगर जोश में मैं कहूँ type of line, इसे रन करते हैं. मजा नहीं लाइफ. जरा देखने में मजा आया क्या वो? मतलब एक को तो स्ट्रिंग लिया, बट ये क्या है समझा? लैंग दिख रहा है, बट अल्टीमेटली दैट्स अ फंक्शन एंड वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, नथिंग बियॉन्ड दैट. अब समझा सबको? हाँ सर. Yes, ओके. sir. तो चलो तुम लोग को और सताता हूँ एक बार अगेन. इज एवरीबडी क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ डेकोरेटर? बिकॉज दैट्स अ वेरी ट्रिकी. आई वांट एवरीबडी टू से यस और नो. Any doubt? Then it's a good time. I'm counting. Till now 7 people have only said yes. I'm still waiting. I want everybody to again say. जिन्हें पहले भी बोला होगा वापस एक बार बोलो, तकलीफ नहीं होगा. सर आपने ग्रेड को कहा डेकोरेटर कहते हैं, तो जो बाकी के लिखा है आपने, जैसे जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी मराठी, उसको क्या कह सकते हैं? कोई स्पेसिफिक नाम है उसे? Those are functions. सिर्फ फंक्शन, मतलब उसके अंदर मुझे लगा कोई टर्म. Old function, if you want, you can say that, and the upper one, that is the greet, is the decorator function. ओके सर, थैंक यू. Most welcome. We have 32 people saying yes out of 60. Poor. बहुत खराब हालत है. Others waiting. कोई doubt है तो पूछ लो. Believe me, इतना basic कोई नहीं सिखाने वाला, ना ही कोई book में mention होगा. They will just give you this diagram, this function, and खत्म. I want people to realize, is it clear? Any doubt? Ask now, because we are going in a series, so I can help you all. Come on, jaldi. Everybody done with this? Worked with this? Clear? Any doubt, any query? Anyone wants to ask anything? Sure. We have roughly 46 people saying yes, so I consider majority is now clear. So let us go ahead. ठीक है. And यार function में तो पूरा दुनिया भर का इसने नया नया दिया है. हम लोग के पास 3 तरह के functions दिए, operations दिए, value दिया, working सब दिया. अब एक चीज जो इसने दिया नहीं है but इसमें है, that is called recursion. We all know what recursion is about. We all know how recursion works into Pritchard. Recursion is a function calling itself. We all know. Okay, recursion is a function calling itself. Function जब खुद से खुद को
कॉल करता है तो उसे रिकर्शन कहा जाता है. That's how we put into picture. So if we say that's recursion, good, bad, etc. बात शुरू करते हैं. So recursion के बारे में हम लोग कहते हैं whenever we say recursion क्या है? Function calling itself. Okay. Good thing about recursion and the bad thing about recursion. People would like to help. Recursion में अच्छा क्या है, बुरा क्या है? What is good about recursion? What is the bad about recursion? Make code look smaller. Code look smaller. It can be used as a loop. So code छोटा दिखता है. Code looks smaller, hence readable. Hence readable. ज्यादा readable कर देता है कोड को. क्यों? छोटा है ना कोड, तो ज्यादा easily people would like to read and work with it. तो ठीक है, चलो अच्छी बात है. Code looks smaller, more readable, good thing. Apart from that, if we go ahead with that, code looks smaller and makes it more readable. ठीक है. Apart from that, positive में there is nothing much to it. So that has to be negative wholesale में. Number one, takes more time. Takes more time. Slow कर देता है मतलब सर, हाँ, slow. वो स्लो कर देता है सिस्टम. सो स्लो डाउन करता है सिस्टम, तुम्हारा स्लो डाउन कर लेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स मोर मेमोरी. टेक्स मोर मेमोरी. टेक्स मोर मेमोरी. देन सो टेक्स मोर मेमोरी देन वर्किंग फर्दर. मेमोरी जो रहता है स्लो करता है. कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड. अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के हिसाब से. यार, makes code look smaller, hence more readable, but takes more time, slow down करता है, मेमोरी ज्यादा लेता है, complex to understand. ए भाई, एक फाइनल बोल यूज करने का है या नहीं? इंटरव्यू में भी तुम लोगों को यही पूछा जाता है, and I always love this answer. Should be used as जरा रुको, last option. If you think recursion should be the first option, never ever ever. Recursion याद रखना, recursion जब भी यूज करो मेरे दोस्त, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट नहीं. ये याद रखना, इंटरव्यूज में हम लोग बहुत बार ये डालते हैं. Do you think using recursion is a good idea? Say yes sir, but only as a last option. पहला ऑप्शन तुम लोग recursion यूज करोगे, believe me, it doesn't make any damn sense. क्यों? जितना रिकर्शन यूज करने के बारे में बात करो, जितना बात करो रिकर्शन रिकर्शन रिकर्शन, भैया भारी पड़ेगा, क्योंकि वो स्लो डाउन कर रहा है, मेमोरी ज्यादा खा रहा है, कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए. सो रिकर्सिव फंक्शन रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम इवन फॉर टेस्टिंग. कि यार देख, ये वैल्यू डाल के देख, वो वैल्यू डाल के देख, चल रहा है नहीं चल रहा है. तो हम लोग इंडस्ट्री वाइज अगर कोई तुमको पूछे यार रिकर्शन अच्छा आइडिया है का बुरा, अच्छा बुरा बाद में, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. पहला ऑप्शन रिकर्शन कभी भी नहीं होना चाहिए. Try to remember this so that if somebody asks you anytime recursion, your answer should be very clear. Last option है, और कुछ हो ही नहीं सकता तो यूज कर ले. अगर और कुछ हो सकता है, try not to, because ultimately वरना आगे जाके तकलीफ होगा, आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगे. So be very very careful. जब recursion का बात आता है, उसे संभाल के यूज करेंगे. Everybody clear I feel? अब ये तो ठीक है यार, बोल दिया मैंने, तुम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत प्यारे लोग हो तुम लोग, आई एग्री विद दैट. सो एक सिंपल है, रिकर्शन तुम लोग ने शायद सी, जावा या बाकी के लैंग्वेजेस में किया होगा. सर हम लोग ने बाकी लैंग्वेज किया ही नहीं है. ओके, आई कुड सी दैट. लॉट ऑफ पीपल लाइक नहीं आते कुछ भी मत बोल. सो ठीक है, विल बी डूइंग दैट. सो रिकर्शन के दो प्रॉब्लम्स सबसे पॉपुलर माने जाते हैं. उसमें से एक है फैक्टोरियल. ये इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बेसिक स्कूलिंग सब जगह पे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, और ये बहुत बार तुम लोग को इंटरव्यू में भी डाल देते हैं, जस्ट टू से और सी आर यू क्लियर विद द फैक्ट. सो लेट अस ट्राई टू वर्क विद इट, लेट अस ट्राई टू ऑपरेट विद इट. सो हियर आई एम गोइंग विद द रिकर्शन.
याद रखना रिकर्जन लास्ट ऑप्शन होगा दोस्त, फर्स्ट कभी नहीं होगा. So that's what we are working with. So let's put this. F factorial working with n if n equal to 1 r e du r n. 1 return कर देना दोस्त. Else r e du r n into factorial of n minus 1. Oh. Okay, let's go with it. This. तो अब प्ले करते हैं. Sir, let's work with fact of 4. Ideally, it should give me 4 into 3 into 2 into 1, which is 24. Voila, job done. Now the most interesting thing starts. Sir, ठीक है, कर दिया आपने. अच्छा बात है, देख के अच्छा लगा. चला कैसे? I mean, how and what worked? I mean, how this thing worked. People pay extra attention how things are going to work, how things are going to operate. Before that, I hope everybody has taken down this. Should I remove it? Okay, thank you. So as we work, people, pay attention because this is more fun to work with. Acha, by factorial खेलते हैं. So let me just take this particular line. So this is just the call. So ये पहला line है. Call का, we'll work with it. So this is a call वाला line. जो आपको call देगा. This is what is going to return. Now return is going to be very important because ultimately return पे ही तुम लोग आगे का काम करने वाले हो. Return पे ही आगे का काम चलेगा. Finally ये तो ठीक है, बीच में लाइफ में एक ही बार ये चलेगा बेचारा. ठीक है. अब मैं अपना स्टोरी शुरू कर रहा हूँ. People please pay extra attention how we are going to work. So consider this way. इसे आगे स्टोरी चलाते हैं. Now the first thing which will be happening, people please pay attention. Sir, आपने डाला है fact of 4. Fact of 4. Factorial of 4 is what we are putting into. Factorial of 4 we are putting into. So fact of 4 is what we are supposed to work on. ठीक है, चलेगा सर. पहला 1 है, नहीं नीचे जाएगा. अब ये नीचे क्या कर रहा है जरा. It would say n into fact of 3. Sir, n आपका 4 है. Very good. So they will say 4 into fact of 3. Sir, fact of 3 मेरे को नहीं मालूम. तो बोलेगा काम कर. Stack memory बना. This memory is called stack memory by the way. तो बोलेगा काम करना अमर. Fact of 4 बाद में दो. Fact of 3 के पीछे पड़ो. So then it is fact of 3 coming into picture. ठीक है. A fact of 3 is very simple. 3 into fact of 2. So then in that case we work with हमारे fact of 2 भी ढूंढने नहीं मान. तो एक काम करो मत. Fact of 3 बाद में ढूंढना. पहले fact of 2 ढूंढ. So we go further. अब हम लोग पीछे पढ़ते हैं. Fact of that is 2 into fact of 1. अरे यार अमर एक काम करना. Fact of 2 भी बाद में ढूंढ. पहले fact of 1 तो ढूंढ के आते तो हम लोग को मालूम पड़े आगे क्या करने का. तो मैंने बोला ठीक है. मैंने स्टैक पे वापस fact of 2 डाल. अब सिस्टम चालू करूंगा. ठीक है. अब फाइनली fact of 1 मैंने ढूंढ. ए अमर fact of 1 ढूंढ. कांग्रेट्स. अब यहाँ से लाइफ उल्टा चलेगा. नो, the fun life is gonna work reverse. Fun life is gonna work ulta. क्यों? देख लो. But now the system works in a very interesting manner. ये बोलते हैं अमर इसका आंसर तो 1 आता है. सर कैसे? n1 1 रिटर्न. अब कांग्रेट्स मेरे दोस्त, तुमने फैक्ट ऑफ 1 क्रैक कर दिया. 1 है और तुमको ये भी मालूम पड़ गया 2 into 1 is 2.
तो सर ये तो आपने कांग्रेस फैक्टर ऑफ 2 ढूंढ निकाला, वेरी गुड। आपने खुद बोला अमर 2 आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड। 3 into 2, कांग्रेस ने 6 ढूंढ निकाला, तो ये तो सर फैक्टर ऑफ 3 मिल गया, कांग्रेस। वो आगे दिया, अरे 3 तो आ गया ना अमर, सीधा बात है, ये 24 है, कांग्रेस तुमने फैक्टर ऑफ 4 भी निकाला, और तब जाके तुमने दिया 24। Is everybody clear with this? This is a question. सर एक मिनट, अब एक क्वेश्चन का आंसर। आपने बोला था ये प्रोग्राम को स्लो कर देता है, हालत देख रहे हो स्पीड ब्रेकर की तरह। ए रुक 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 रुक, फैक्ट 3 निकाल, फैक्ट 3 निकाल। ए रुक 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 रुक, फैक्ट ऑफ 2 निकाल, फैक्ट ऑफ 2। ए रुक रुक रुक, अरे रुक मतलब हर बार कंट्रोल रुकेगा, ये मेमोरी पे सेव होगा, फिर नया नो फंक्शन चलेगा, रुकेगा, सेव होगा, नया। दैट इज टाइम कंज्यूमिंग यार, पैसा टाइम दोनों जाएगा तुम्हारा। ठीक है सर, ज्यादा मेमोरी कैसे लेता है? ये फ्री में है नहीं ना, रैम में जाएगा। इमेजिन करो जोश में तुम लोग बोले सर फैक्टोरियल ऑफ 1000 ढूंढते हैं क्या, बैंड बज गई। नाउ 1000 ढूंढने के लिए फैक्ट ऑफ 1000 से फैक्ट ऑफ 2 तक सब कुछ स्टैक पे आएगा, यानी ये सोच रहे हो स्टैक का साइज क्या होगा। This is going to cost memory, this is going to cost memory and complex to understand। इतना ही बोल सकता हूँ कि मुझे समझाना पड़ा, तुमको डायरेक्टली नहीं है, तो I had to actually go through the entire stuff। तो I would request people, I give you 2 minutes, but हो सके ना छोटा सा काम करो, ये जैसा मैंने बनाया वैसा कॉपी करके रख लो, so that you understand next time somebody asks you stack, you should be ready with the entire thing कि recursion ऐसे चलता है। Recursion works reverse way, यानी कि लास्ट से फर्स्ट पे आता है, ये याद रखना, लास्ट से फर्स्ट पे आता है, याद रखना। ठीक है, ठीक है।
Okay, everybody done, I feel? Any doubt, any query, anyone? Okay, so this is how recursion is going to work. If this is clear, one question I want you guys to solve. Anybody having any doubt with this? Sabka ho gaya likhe? Done? People, any doubt, any query, anyone? Okay, thank you, Sarah. Chalo, see couple of hands coming up. Chalo, अच्छी बात है. अब समझो ये हो, solve कर लिया, सही. I want you guys to work on recursion with one more code to it. Let's see how would you guys do this. I'm giving you the algorithm. You would decide how to use it. This is a famous algorithm. We call it a GCD algorithm. We say GCD of number 1 and number. ये बोला जाता है if number 1 more number 2 equals to 0, then number 2 is GCD. Number 2 is GCD. ये famous algorithm है, by the way. Else, वरना, let number 1 or number 0 be number 1 and number 1 be number 0, or sorry, 1 2 है ना आपके पास, my mistake. Let number 1 be number 2 and number 2 be number 1 or number 2. मैंने पूरा प्रोग्राम दे दिया, अब सिर्फ दिमाग लगाओ रिकर्शन कैसे आएगा इसमें. Give you 5 minutes for this. I want a recursive code of a GCD, but ये टाइमर में थोड़ा बाद में चालू करता हूँ, because जो बुद्धिजीवी कैरेक्टर्स है उनका एक प्यारा सा क्वेश्चन आ सकता है, सर GCD क्या होता है, वो तो बोलो, वो तो तुम बोला ही नहीं हम लोग को. ओके, लेटेस्ट फॉर्मेट परफेक्ट. फुल फॉर्म सबको मालूम होता है, वेरी गुड दोस्त. तो if I tell you 15 versus no, let's say 15 versus 12, GCD बोलो इसका क्या होगा people? 15 versus 12 GCD, come on, be quick. 3 Very well, good. 3 5s are 5 1s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are. The only greatest thing I could see is 3. So the GCD is 3. अब ये तो मैंने मैनुअल निकाला, अपने पास प्रोग्राम है. Now 5 minutes timer specially to check GCD कैसे करोगे. So here was the 5-minute timer. Start. 5 minutes. कोड कैसे करना है, that's the only thing, because ideally मैंने कोड तो बहुत easily दे दिया है. This is very simple to work with. Should be able to.
Last 10 seconds. Okay. Let's see how many could do that. मेरे को सिर्फ एक ही दिख रहा है. More or less वो भी सिर्फ number दे रहा है. Okay. What went wrong? Okay, एक आंसर आया. Oh, Varkha has given this answer. Number is GCD. Very close. थोड़ा गड़बड़ है syntax में. बाकी ठीक है. But Varkha run नहीं होगा. I can guarantee you that. Getting rid of the answer. It's mode pretty well. Nishad good. Prakshit going with yours. Pretty nicely handled. Good. Lokesh going with yours. Good to see this. Shut up. Jay going with yours. Can be shortened again. Sagar. Jay. Jay Sagar. Okay. People. My turn. See, जो कोड दिया गया है, जो बोला गया, वही मैं कर रहा हूँ. So let's go with that. GCD. दो नंबर लोगे. Number 1, number 2. Colon. As we start working on it, as we start operating on it, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. क्या करना है? So जो बोला है वैसे. Number 1, number mod 2 equal to 0. Then number 2 is GCD. ठीक है, चलो सर. वही करते हैं. सर तो लिखो. If number 1 mod number 2 equal to 0, RETURN number 2. पहला फंडा. ठीक है सर. Number 2 आ गया. चलो अब else. अब जरा ध्यान दो. Let number 1 be number 2, number 2 be number 1 mod number. Okay. More important. Let's try to. Okay. तो सर मतलब क्या करेंगे? RETURN return GCD. Then we are saying number 2. सर एक मिनट. Number 1 भी number 2. Number 1 पहला है ना, तो number 2 वहां पे पास कर दो. सर फिर number 2 आता है, which is number 1 mod number 2. Work that way. And you play with it. Indentation का गड़बड़ हुआ शायद. Indentation had an issue, but let's run this now. So ये तो हो गया. अब बात करते हैं GCD bracket 12,6. Be careful, 6 only is a GCD straight. ठीक है सर. अपना वाला डालो ना. 25 versus 15. If I say 5, you got a GCD. फंडा बहुत सिंपल सा है, बहुत डायरेक्ट है. यही कर रहा हूँ. फर्क है the way we have written over. Swapping तुम नहीं करोगे. Swapping का सिर्फ एक concept use करोगे. Operation. Is everybody clear with this now? Yes, no, waiting. People clear with how we are approaching this? Yes, no, waiting. Hello, sir. Yeah, go ahead. Sir, I am reading integer division or modulo by 0 error. What is that? क्या मिल रहा है दोस्त? Integer division or modulo by 0 error. तूने स्टॉप किस पे किया? रुक, स्क्रीन शेयर कर. Awesome. Giving you ability. Wait, go ahead. One equal to 0. Hey, Baba. Number 1 is GCD. How can you send this? You can either print or you can return, right? Return अगर करना है तो तुझे string करना पड़ेगा. You cannot write. Programming का बैंड बजा दिया. What is return? Number 1 is GCD.
Programming है ना दोस्त? You either send the number 1 2 or you will be working with it. So वहां पे गड़बड़ आ रहा है, इसलिए तुझे error आ रहा है. So the third line in your code has to be just written number 2, not is GCD, because वो string और digit के बीच में confuse हो रहा है कि करना क्या. Okay. Anybody else? Anybody else having any doubt? Anything? People? All clean? All clear? Any doubt? Any query? People clear with this? All good? एक और. People. अब जरा संभल के, I want recursion ना compulsory. Don't give me direct calculation. मुझे power xn करके दो. मतलब सर क्या करना है? Recursion यूज करना है. If let me use the red one. If n equal to 0, तो तुम return करोगे 1. Else it is n into n and so on. सर मतलब एक बात बोलो, ये n दोगे वरना सॉरी x into x and so on. That is how to work with it. So x into x into x into x to work into क्या क्यों कैसे करोगे, किस तरह से ऑपरेट करोगे. सो मेकिंग वन थिंग ऑब्वियस, रिटर्न में ही बात है. ऊपर का तो मैंने खुद दे दिया, नीचे का रिटर्न कैसे करोगे. फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम है. फैक्टोरियल में नंबर कम होता है, यहाँ पे पावर कम होता है. अब दिमाग लगा. चार लाइन का कोड है. कौस्तभ यू नीड टू रिटर्न फंक्शन. रिकर्शन में हम लोग ने बोला फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. जैसे मैं हिंदी में मजा आता है मेरे को बोलने का, वो फंक्शन जो खुद से खुद को कॉल करता है, दैट्स रिकर्शन. दैट इज मिसिंग.
Good. Now, if we intend to work with, now we intend to operate with people. Wow. Good to see. People are on track. मैंने जैसे कहा था, ये ultimately factorial का ही program है. If you feel that is something different, no. It is factorial वाला ही program. फर्क है the way we work, फर्क है the way we operate. तो सर मतलब factorial ही है. I won't say factorial, but near about वही concept पे चलते हैं. फर्क है यहाँ पे हम लोग दो चीजें ले रहे हैं. So let's call it power x and n. So if n is equal to 0, we'll return 1. Else we will return x into power of x comma n minus 1. और सर काम हो जाएगा more or less. If we say power 2 comma 4, we get 16. रिकर्शन यूज किया, डायरेक्ट पावर फंक्शन यूज कर सकते हो, बट रिकर्शन अगर बोला है मैंने प्रिसाइजली कि रिकर्शन यूज करके दो, तो दिस इज अ मोर प्रॉपर आंसर. ओके, नाउ इमेजिन तुमने प्रैक्टिकली क्या किया. नाउ यू प्रैक्टिकली डिड वाज अ जॉब ऑफ गेटिंग एवरीथिंग प्रिपेयर्ड एंड वर्क विद इट. एवरीथिंग प्रिपेयर्ड एंड वर्क विद इट. So this is what we have done. This is what you guys would be doing. Everybody clear with this? Any query, any questions? Okay, well and good. In that case, today as such, thoda 10 minute jaldi ho raha, but I'm leaving you. I'm leaving you with some work. Just wait. Okay. Bring a normal screen. Okay. So how things are going to be, how things are going to be operated, how things are going to be worked. So it's simple sa funda hai what we are planning to do, what we are trying to operate on. It's a very simple system. जो हम लोग बात कर रहे हैं. Normal screen. Sure. Now, how things are going to work, how things are going to be operated is a very simple thing. Since majority of you had given this message or asked, sir, oh, or questions. तो मैं पूरा तुम लोग को 150 क्वेश्चन का लिस्ट ही डाल रहा हूँ. आंसर्स एज आई सेड टुवर्ड्स द लास्ट डे, वरना चलो आंसर्स के साथ दे रहा हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू गो थ्रू फर्स्ट इज द क्वेश्चन एंड देन वर्क विद इट. आई एम जस्ट अपलोडिंग फ्यू थिंग्स. सर आपने नोट्स का भी कहा था. वही कर रहा हूँ दोस्त. गिव मी अ मिनट. So let me put some data to your drives. बाद में मैं एक और बोला. सर आप वैसे फाइल मिल सकती है पीडीएफ जिसमें अलग अलग के हो, जैसे एडिशंस के अलग क्वेश्चंस हो, फंक्शंस के अलग क्वेश्चंस हो, ताकि जिसमें किसी में डाउट हो वो क्वेश्चंस हम ज्यादा कर सके. पहले तो ये 150 तो हैंडल करो. दिस इज स्टिल डेटा स्ट्रक्चर्स एवरीथिंग. Then we have a separate file, but then we have on a higher technologies. By saying higher technologies, we have things. 1 minute. Questions. Okay, just give me a second. Let me check. Okay, now what we have. ये file backend पे project कर. मेरे पास एक्सेस. This is a file which I am sending it across. Sir क्या है? ज़्यादा नहीं, करीबन 150 questions है with the solutions as such. So if I go in all, ज़्यादा नहीं, 50 pages है. Question answer. These are most of the questions जो हम लोग interview preparations के लिए refer करते हैं. पहले इस level को एड्रेस करना सीखो. इसमें से कुछ आउट ऑफ द सिलेबस भी होंगे आपके कॉन्सेप्ट को देखते हुए, बट हाँ मेजोरिटी दिस इनका स्पेशलिटी है. स्ट्रिंग तक का सब कुछ है इसमें. फिर एज द फिलास एज जो मेरे दोस्त ने पूछा कि सर अलग अलग कर सकते हैं, फिर आई हैव अ फंक्शंस एंड अदर थिंग, बट यहाँ तक देयर इज नो सेपरेशन बिकॉज दैट्स अ कोर पाइथन जो हम लोग बात करते हैं. तो दिस इज एग्जैक्ट फाइल व्हिच आई एम अपलोडिंग राइट नाउ टू यू गाइस. गाइस कीप इट रेडी. नोट्स करके एक सेक्शन आ जाएगा तुम लोग के इसमें. जस्ट आई एम अपलोडिंग दैट थिंग. जस्ट अ मिनट.
let me check it out. Okay, this is set 1, which is called basics. People in your classroom, जरा देखते जाओ, चीजें एक एक करके ऐड हो रही है, देख लो, reconfirm. Yes, yes. मिला? Similarly, notes भी मैं पूरा release कर देता. My idea was to give it at the end, but since you guys are valid enough to ask कि sir नहीं पहले दो तो हम लोग refer करें. ये problem है बाद में तुम लोग खुद के notes बनाते नहीं हो, and that's one thing which I hate. I want everybody to make it a point that you do create your own notes apart from getting these things done. दूसरा एक cheat sheet नाम का भी चीज होता है जो हम लोग use करते हैं. तो that's a basic idea जहाँ पे concept है ऐसा है कि हम लोग directly इन्हें operation wise use करना शुरू कर देते हैं. तो ये सारी चीजें people go through classroom में दिख रहा है दोनों. People reconfirm. मेरे साइड से पोस्ट हो चुका है. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है sir. Perfect. Okay. So you have now जो जिन्हें question था like sir वो identical ये वो इसमें सारे questions मेरे listed है. सिर्फ शांति से I would request one thing. I'll request one thing to everybody. Try not to see answer and solve. Okay. सिर्फ question पढ़ो और छोड़ दो. Try to break your head, work with it. जहाँ हार जाओ, discuss करके हो जाए, नहीं हो रहा है, तब जाके solutions देखो. I would request that rather than just blindly copy करना. मैंने तुम लोग को ये गीता नहीं दिया कि भाई गीता सा रट्टा मारना. गीता में भगवान ने ये बोला है. गैस साइड में बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन लो खुद सॉल्व करो तो ही तुम लोग इसे कर पाओगे, वरना बिलीव मी इट्स ऑफ नो यूज. ऐसे 50 फाइल में दे सकता हूँ, बट अगर रट्टा ही मारना है तो भाई ये कोई रटाफिकेशन का फंडा नहीं है. सो डोंट डू क्रैमिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद इट. एवरीबॉडी क्लियर? I'll stop with this for the day. So leaving you with a lot of stuff in your hand. Go through, start working.